Hello, good afternoon to everyone. आज क्लास रे हमें पढ़िबा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जोटा कि तुम्हारा सिलेबस ट्राई करिया कवर अप करिया को स्टार्ट टू एंड जेति की बारिया पढ़िबा. ओके, तो विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1. जे लेट क्लास जॉइन करिवो यू कैन गो बैक एंड चेक आउट द जा भी पढ़ाई छै आगर. ओके, the first one is your chapter 1 is your logic gates. Okay, we will only discuss the question bank that is given for the SETVT diploma by जोड़ा दिया ही छै. Okay, first question अछि देखो फर्स्ट एथिरे टीम 2 मार्क क्वेश्चन अछि तापर लॉन्ग क्वेश्चन अछि. फर्स्ट चेक करिवा डिफाइन फैन इन फैन आउट. फैन इन फैन आउट एटा कोन, व्हाट इज फैन इन फैन आउट? इफ यू लुक एट द definition, the fan in fan out of a logic gate is the number of inputs that the gate can accept. जदि गोटे गेट रो एक्सेप्टेंस लिमिट अछि, जदि गोटे सिंगल बिट रो गेट अछि, गोटे इन नेबो गोटे आउट देबो, so that kind of thing is known as fan in and fan out. Okay, so गोटे इन को fan in कहा जाए, गोटे आउट को fan out कहा जाए. that is the fan in fan out. Okay, जोटा 2 मार्क क्वेश्चन अछि गो थ्रू कर दबो टिके, जोटा टेक्निकल पास अछि टेक्निकल पार्ट जोटी आसीबो ताको टिके एनालाइज करिवा. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच गेट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट काको कहा जाए से क्वेश्चन अछि. देखियो NAND and NOR are universal gate cause we can build up any gate out of it. तार डेफिनेशन हला ये जा डेफिनेशन लिखी छी, NAND and NOR are universal gate cause we can make any gate out of it. Okay, this one je tomo dekha jauna thibo, I will highlight this one. Is the NAND and NOR gate. Okay, NAND gate is a NAND gate, NOR gate. If in drawing form, if you look out, the NAND looks like this is the NAND gate and this is a, we will discuss all these gates later. Okay, question asila pare ame गुटे गुटे करके डेस मैं गेट गुडा को चेक आउट करिवा. Next one is what is logic gate. It is a basic building blocks of digital elect circuit that performs a logical operation. जोटा कि लॉजिकल ऑपरेशन जोटा मेनली ऑपरेशन ता तले देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एंड ऑपरेशन फाइ वी यूज करो एंड गेट. This is the AND gate. OR pi we are using OR gate. For the NOT operation we are using inverse gate or NOT gate. Okay, just देखिबा AND operation. If you look at the logic gates, this is the logical gates, this is the primary gate, buffer ठीक है बेसिक बते दउजी. This is the NOT gate जो NOT लागि थिबो, this is sign of inversion. Is it visible on screen? Screen रे देखा जाउची कि रे? हो buffer तापर inversion अछि. तापर next we have AND gate जोटा मल्टीप्लाई करे A into B करिवो जाको A dot V फॉर्मेट रे लिखा जाए. Next we have after this AND gate we have OR gates जोटा ऐड करिवो A plus B करिवो. Next we have यार दीटा वर्जन अछि, तर अल्टर वर्जन अछि लागी AND रो NAND अछि. This is the NAND gate जोटा आउटपुट को रिवर्स करिवो मल्टीप्लाई हला परे. And similarly for the OR gate we have NOR gates. This is the NOR gate. Okay, these are the different gates. Wait 1 second, we'll discuss the next part. ठीक है देखो दाओ क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक देखो दाओ. ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 को देखो दाओ. ओके, तापर क्वेश्चन अछि राइट द नेम्स ऑफ बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन. तो जोटा बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन अछि फर्स्ट अछि एंड ऑपरेशन जोटे मल्टीप्लाई होय. ऑपरेशन गुडा गुडी देखि देबा. विल जंप टू द ऑपरेशन पार्ट. वी हैव डिफरेंट ऑपरेशन लाइक जेमती अरिथमेटिक रे पढी जाओ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ओके, वी डोंट कंसीडर डिवीजन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. विल कंसीडर दिस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन. ये भी कंसीडर करा होय नहीं केतेडा केस रे सेकंड कॉम्प्लीमेंट हिसाब रे ताको बढ़ा जाए. Okay, we'll check out the addition one. For the 0 0 value, for 0 plus 0 we'll get 0, 0 plus 1 we'll get 1, 1 plus 0 we get 1,
For 1 plus 1, this one is the special case. 1 plus 1 will get, if you write in the form of digit, it will write 0 lekhibo, 1 for the carry 1, but actual jodi parameter signal form re thiba yaku 1 lekhibo. Okay, so 1 0 dita hi pariba for the 1 plus 1. Next jump to the next part, subtraction dekhiba. For the 0 minus 0, it is 0 0 minus 1 equals to 1. ये होची गोटे स्पेशल पार्ट. ओके, जेमति ये गोटे स्पेशल पार्ट थिला. This is the special part where 1 you have to borrow 1. गोटे 1 आनिबा उधारी आनिबा गोटे borrow. Will borrow 1. Am I audible clearly? Can anyone say in the chat ki audio आछी ना नाही कहिबो टिके. Okay, so these are the parameters. तापर होची 0 minus 1 minus 0, that is 1, or 1 minus 1, that is 0. Okay, this special part अछि, we'll discuss that later. तापर next question को जीवा, what is the operator बुझिलो. Next, write the truth table and draw the symbol of XNOR gate. Okay, if you look at for different gates, XOR भितर फरक मु कहि दउजी, देखो difference देखिबो. If you look at for XOR and XNOR, okay, confuse hoboni di gate मझिरे. For the XOR gate, similar gate, खाली गोटे नॉट लागिथिबो कि देखिबो. Not for the XNOR, आउ XOR टा सेम रहिबो. If you jump for the output, ये output देखिबो. For the XOR you will get XOR पाइबा 0 1 1 0. XOR पाई, if both inputs are 0, if A equals to 0, B equals to 0, then you will get 0. A equals to 1, B equals to 1, you will get 0. Okay, rest for it will get 1. Okay, alter mane input यदि अलग अलग थिबो, you will get 1. Input same रहिले, you will get 0. Next jump to the XNOR part. XNOR देखिबो तो इतले कोन हबो. For the same input you will get 1. Same input रे तमे 1 पाइबो, you will get 1. Okay, ये बेसिक गेट गुडा को निजे पढिबा. तापर अछि draw the AY gate for the Boolean expression. This ये होची important part. एबे आसिला important part, how to draw gates from any Boolean expression. Okay, किछि Boolean expression देछि एटी A plus B B dash plus C. दीटा पार्ट्स रे अछि, A plus B into B dash plus C. A plus B into B dash plus C. Okay, if you look for the केमदी करिबा, देखो इजी फॉर्मेट कोडा. which one is the easy format. एग्जाम रे एटा पर्टिकुलर दबोनी, एबे चेंज करि पारे और तई भी पारे सेटा. तो देखिबो जतेटा बुलियन एक्सप्रेशन जी फर्स्ट लिखि देबो, जोटा अलजेब्रा रे यूनिट असंती, लाइक अननोन जे अछि A लिखिबो फर्स्ट, B लिखिबो फर्स्ट, C लिखिबो फर्स्ट. ये इजी वे कहि दउची. एटा असनी विल जंप ओवर हियर. A लिखिबो फर्स्ट, B लिखिबो फर्स्ट, C लिखिबो फर्स्ट. ABC लिखिलो. देन तापर देखिबो कार डैश अछि. Look for the dash. A रो डैश अछि कि A करेक्ट अछि, A रो डैश नहीं, B रो डैश अछि. देखो also if you look at the third term, second term रो first देखियो B is a B dash, तो B को B dash कर दो first. You will put a NOT gate over here, you will get B dash. Okay, ये हैला first part. First you will write the variable, तापर dash जहार थेबो dash लिखिबो NOT gate देकी. Next jump to the next part. कोन कहिछि, तापर A plus B B dash plus C. easy अछि. A plus B, A और B की ने ऐड करिबा. तापर A को नबा ए गुडे लाइन ने जो A B ने जीवो, you will add those part. add by हम यूज करिबा OR gate. This is the add A plus B पाइला. देखा जाउ जे न, इरेज कर दबा. देखो get A plus B. Okay, this is the first part. You got this. तापर कोन अछि first part B dash plus C. Next part अछि B dash plus C. A B dash अछि, C अछि, B dash plus C. You will apply OR gate, A गुडे OR gate apply करियो, you will get B dash plus C. दीटा पार्ट मिली वाला. फर्स्ट टर्म मिलिला A plus B, next term will get B dash plus C. ताबे दी टर्म टा मल्टीप्लाई हे जंती, दी पार्ट टा मल्टीप्लाई हे जंती. For the multiplication we will apply a multiplication apply करिया गुटे AND gate. Okay, you will get the output. Okay, एति ही करिवार अछि. बुझी पाला ना नाही, जे बुझी न पाला डी बैक करके आउतर देखि देबो. फर्स्ट पैरामीटर लिखिबो, जनरल एमते A B C D जहां भी थिबो लिखिबो, तापर तार डैश बनेइबो.
डैश बनैला पर जो ऑपरेशन अछि ताकू लिखिबो इजी, जेटा इजी फॉर्मेट। आ कुछ कॉम्प्लिकेटेड आसले देखिबा जेमति ये करछि देखंतु ए बी नला ए बी रु ए प्लस बी पाइबो से। इफ यू लुक एट द थर्ड टर्म बी रु बी डैश, इटी बी डैश मिलला ताकू बी डैश प्लस सी, इटी मिलला ताकू बी डैश प्लस सी। तापर ए दीडा ए दिस पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू रे। ओके, नेक्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट फॉर दिस लॉजिक गेट। ओके यार आउटपुट लिखिबार अछि वेरी इजी। फर्स्ट लिखि ए प्लस बी, जोटा जोटा गेट तुमको फर्स्ट गेट अछि ताकू कंप्लीट करके चलियो। ओके फर्स्ट गेट अछि ए बी नॉट गेट, सो वी विल राइट डाउन ए प्लस बी बार। दिस इज नॉट गेट। सी अछि, सी रो नॉट गेट लागिछि सी डैश और सी बार दे दियो इजी हेबो। तापर सी डी और गेट अछंती, सो सी प्लस डी, सो वी विल गेट इन आउटपुट ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई हिछि लास्ट गेट एटा मल्टीप्लाई गेट सी बार इंटू सी प्लस डी। आपको सॉल्व कले भी चलियो बट सॉल्व करिवार नाही, सेटा ही करछि। लुक्स ओवर योर आउटपुट सेटा देछि, दैट्स इजी। गॉट दिस, बुझी पाला ना नहीं। तापर देखिबा ड्रॉ द सिंबल ऑफ द राइट द ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट और गेट एक्सओर गेट। तीनटा इनपुट पाई एक्सओर गेट ये होछि टिके डिफिकल्ट ट्रिकी वन। ताको देखियो 3 इनपुट देखो तीनटा इनपुट पाई वेरिएबल लिखियो हम सिखे दउछि। फॉर एनी 3 इनपुट्स यू राइट ए बी सी, आठटा टर्म्स आसीबो 3 वेरिएबल, तो हाईएस्ट वैल्यू होछि 1 1 1, हाईएस्ट वैल्यू केते 7, तो 8टा पार्ट्स आसीबो 0 0 0 स्टार्ट हबो 0 0 0 स्टार्ट हबो। लिखियो सिखे दउछि सीक्वेंस 4टा 0 लिखियो 0 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एमती चॉइस लिखा जाए। ओके तापर देखिबो वेरी इजी फॉर द एक्सओर को गेट कहि छै एटा XOR gate पाई मैं कहितली it will get 1 for any odd of 1, यदि odd 1 रे रहिबा तापर 1 पाइबो XOR gate, एटा XOR gate पाई सेम माने odd वैल्यू 1 आसिले 1 पाइबो। फर्स्ट वैल्यू देखो 0 0 0 1 नाही तो वी डायरेक्टली गेट 0 0 0 1 गोटे 1 अछि ना नहीं गोटे 1 अछि, दे विल गेट 1 odd नंबर 1 मिलबा कथा 0 1 0 1 अछि गोटे 1 अछि, विल राइट 1। Next we have 2 ones, दीटा अछि, we'll get 0. Next तापर देखिबा गोटे 1 अछि गोटे अछि, we'll get 1. Next we'll get for this 2 1 we'll get 0, दीटा 1 अछि 0, तीनटा अछि देखो लास्ट पार्ट अछि तीनटा 1, so we'll get 1 सेटा कर देछि देखो सिया। लुक द ट्रुथ टेबल बुझी पारियो फॉर XOR गेट देखो 0 0 0 तीनटा 0 अछि तो 0 लिखिबो डायरेक्टली किछि अल्टर करिवा नाही। 0 0 1 ऑड 1 अछि यू राइट 1 0 1 0 ऑड 1 अछि यू राइट 1 0 1 1 1 दीटा 1 अछि यू राइट 0 तापरे गोटे 1 अछि यू राइट 1 तापरे दीटा 1 अछि यू राइट 0। नेक्स्ट वी हैव 2 ones you write 0, next 3 ones a 1 1 1, so this one will right over here बुझी पारला। XOR रे हेमी दियबो यदि x नॉट तो देइनी छाड़ करिवा कोन तार। नेक्स्ट देइ तापरे हाउ कैन ए NAND गेट यूज्ड एज एन इन्वर्टर। NAND गेट केमती इन्वर्टर आकर यूज करिवो। व्हाट इज इन्वर्टर फर्स्ट देखिबा। दिस इज द इन्वर्टर गेट a देले a बार पाइबो, सो दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ a बार जोड़ा यूनिवर्सल गेट यूज करिवो NAND गेट। इफ यू लुक एट द आउटपुट ऑफ NAND गेट देखिबो गेट का आउटपुट कोन a b डैश, तो हमें a b डैश को जदी both side a कर दबा a into a dash that is equals to a into a, so we will get a dash सेटा करछि देखो both side in a दे देबा ऊपर भी a तळे भी a both side आसले you will get y equals to a dot a dash that is ultimately equals to a dash। okay rules कुडा कुडी पढी देबो जोडे बेसिक रूल्स अछि। how NAND gates and NOR gate requires for design of XOR gate एगडा मु बतैबी एडा बतैबी हम होला कोडा केमती लागे। ओके तापर जिबा नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट निजे ट्राई आउट करिवो 5 मार्क क्वेश्चन जो फर्स्ट अछि एक्सप्लेन द बेसिक गेट्स विथ लॉजिक सिंबल ट्रुथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन। ये होची पूरा बेसिक क्वेश्चन लाइक गुटे ये देखो और एंड गेट ड्रॉ करिछि एंड गेट रो इनपुट अछि 0 0 0 ये मल्टीप्लाई गेट 0 into 0 0 0 into 1 0
दिस इज ऑल्सो सेम ओके ये पार्टा निजे करिवो पढ़िबो ओके दिस इज इजी पार्ट एतरे किछि डिफिकल्टीज नाही इट हैज जीरो डिफिकल्टीज ओके वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट और गेट देखिबा और गेट भी सेम आ कोन लॉजिक गेट रो बेसिक गुडा को निजे पढ़िबो तो डिफिकल्ट आसीबो वी विल चेक दैट आउट ताको पढ़िबा ओके एटा सिमिलरली खाली गेट ड्रा करिवो ट्रुथ टेबल ड्रा करिवो एग्जाम में पढ़िले similarly for the NOR gate also right with the need diagram how NOR and NAND gates are used as inverter same question जो आगोर को जो हमें universal gate format में बनाइबा ताकू this is the same question okay like if you जहाँ को भी इन्वर्टर करिवार छी इन्वर्टर पाई both side रे input same दे देबो you will get A equals to A dash for this NAND gate for NOR you will also similar diagram A dash for the NOR gate also okay तो एतरे किछि डिफिकल्टीज नाही describe the how realize the and or not using NAND gate only draw the circuit ये NAND gate नहीं की को गेट बन ये देखो फर्स्ट गेट देखो बोथ साइड रे A इनपुट देला आउटपुट कोन आसीबो ये बोथ साइड हैज A NAND गेट रे A डॉट A बार दैट इज आल्सो इक्वल्स टू A बार माने A आसीला नॉट गेट सैटिस्फाई AND गेट देखिबा A B इनपुट देले आसीबो कोन A डॉट B बार पुणी गोटे नॉट लगे देले आसीबो A डॉट B और गेट पाई देखिबा A बार एटु आसीबो B बार तळु आसीबो सिमिलरली नॉट गेट क्यों यूज करिछि A बार ऊपरु B पाई B बार आसीबो सिंगल देखो बोथ साइड रे B B देछि ना ए B so you will get B bar A will get A bar B bar मिलला तापर आउटपुट रे आसीबो A dash dot B dash whole dash that is ultimately equals to A plus B ये को लॉ डी मॉर्गन्स लॉ एटा होची डी मॉर्गन्स लॉ इज द डी मॉर्गन्स लॉ ओके तो ये बेसिक आइडिया अच्छे गुड़ा को लिखियो पढ़ियो ओके नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट पार्ट राइट द आउटपुट ऑफ ईच गेट्स ट्रुथ टेबल ऑफ अ गिवन सर्किट अच्छा ये होची इंपोर्टेंट वन याकू लिखिबा फर्स्ट गेट आउटपुट कोन हबो एते देखियो मु नंबर कर दउची the 1 gate 2 gate 3 gate 4 gate 5 okay gate 1 आउटपुट कोन आसीबो लुक आउट द गेट 1 A B अछि तो will get the output A plus B for the first one second node अछि B रे node लागि छै so we'll get B node over here A into B node तापरे this gate will get A plus B ऊपर आसीबो A plus B ये मल्टीप्लाई हिजिया संगरे into A dot B naught okay ये आसीबो next gate we have A plus B ताको उल्टा कर देछि A dot B dash एमिति सॉल्यूशन दे जिछि अच्छा तार ट्रुथ टेबल दवा को ट्रुथ टेबल ए बनैबो कोन अछि A B B सब देछि देखो y1 ए फर्स्ट पाई y1 तापरे y2 या y2 A y3 this is y3 and y फाइनल y3 डैश ए बनेबो ट्रुथ टेबल ए इजी क्वेश्चन ओके डिफिकल्टी जोड़ा हो जोड़ा डिफिकल्ट लागियो ताको हमें पूरा सॉल्व करिबा नहले वी विल स्किप दिस पार्ट ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर x इक्वल्स टू दिस मच ओके ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये तुमको बनेबा फॉर्मेट बते दउ जाउ तरे देखो कोडा केते पैरामीटर अछन देखियो फर्स्ट अननोन केतेडा अछंती लुक एट द क्वेश्चन देखो क्वेश्चन लुक एट द क्वेश्चन देखो भल से x equals to b into a plus b dash into b plus c very easy to build okay let me okay देखो को कोडा अननोन अछि फर्स्ट लिखिबो very easy आम पाखरे a b c अछि क्वेश्चन जे भी अछि डैश थाउ जहां भी थाउ फर्स्ट लिखिबो a तापरे b तापरे c जस्ट लिखिबार अछि नॉर्मली तापरे देखिबो कहा कहार डैश अछि क्वेश्चन रे B रो डैश ओनली अवेलेबल अछि तो B को डैश बनेबा B रो नॉट गेट लगेबा विल गेट B डैश तापर A डायरेक्ट अछि C डायरेक्ट अछि हम पाखरे सब पैरामीटर मिली गला देखो B मिलला A मिलला B डैश मिलला C मिलला एबे बनेबा क्वेश्चन फर्स्ट देछि B नॉर्मली गुटे B अछि B को छाड़ दियो तापर अछि A plus B डैश तो A और B डैश को ऐड करिबा A रोहा A B dash add करिबा add पाई और गेट यूज करिवो इज योर A plus B dash फर्स्ट पार्ट मिली गला तापर कोन अछि
B plus C. Next we have B over here, C over here. OR gate use kariba, you will get B plus C. Dita part milli wala A plus B dash this much. Next we have B multiply ହେଇଛି ମାନେ ए दिटा multiply हेबे दिटा को multiply कर दबो like this use a NAND gate x जहाँ भी अमाउंट बाहरला ताको b संगे पूरी multiply कर b को नहीं किया गोटे गेट NAND gate पकेवा दियो these two NAND gates. Okay, you will get ultimate output जहाँ भी b into x माने दी जन को multiply. Okay, सेमिति गोट जी बोधे देखियो first हाँ first देखो सेमिति NOT gate लगे जी b उरे you will get a plus b dash on the first gate a plus b dash first पाई जो हमें b plus c over here तापर दीटा multiply कर 80 ताको x नहीं जीवो you will get b to get the output. Okay, एटा फर्स्ट स्टेप हला a b पैरामीटर लिखिबो a b c जहाँ भी अननोन थिबो तापर आको को स्टेप बाय स्टेप करिवो. It is not difficult आको घुसीबार नाही इजी करिवो आको. Okay, very easy. This is to be the circuit एमिति बनै पारो एटा बनै पारो. Okay, next 10 mark question implement all logic gates using NAND gate. Okay, ये देखो ये होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन. देखो इतरे तुमरो माइंड रे काउंटिंग रहिबा कथा NAND gate पाई. Very easy to build these gates. तो फर्स्ट देखो NAND gate symbol एटा symbol ड्रा करिवो ट्रुथ टेबल दरकार कहि दिले ड्रा करिवो न नाही. NOT gate पाई we need one gate. NOT पाई we need one gate. नंबर देखु दाओ NOT gate पाई one gate हमको दरकार. For the buffer we need two gate. Buffer पाई हमको दीटा गेट दरकार. तापरे अछि हम बकरे AND gate. NAND to AND करिवो we need two gate. NAND to AND we need two gate. OR करिया पाई we need three gate. तापरे OR करिया पाई माइंड रखि दाओ NAND रू XOR करिया पाई XOR we need four gate. XNOR पाई similarly XNOR we need 5 gate. For ये पाई 4 लागिले next पाई 5 लागियो. काउंटिंग रखि दा माइंड रे. नेक्स्ट वी हैव अच्छा और पर यदि NOR करिवार अछि और रो NOR करिले +1 गुटे ऐड कर देबो और 2 का NOR करू जदी. ओके, दिस द गेट स्ट्रक्चर. याको एक्सप्लेन करिवा किछि दरकार नै पढिबो टिके या ऊपर देखिबो. यदि एक्सप्लेन करिया को जीवो तो ये करि परिबो गुटे इजीली गुटे गेट देखो जोटा कहबो गुटे कर दउ XOR कर दउजी बेटर हबो. XOR दिस गेट याको एनालाइज कर दउजी बाकी एनालाइज निजे करिवो. ओके, फर्स्ट ये देखो एडी ए अछि बी अछि. फर्स्ट गेट रो आउटपुट आसीबो फर्स्ट गेट सेकंड गेट थर्ड गेट फोर्थ गेट. फर्स्ट गेट आउटपुट आसीबो a डॉट b बार. फर्स्ट गेट आउटपुट आसीबो a डॉट b बार. ये भी देखा जाउची आई थिंक. सेकंड गेट आउटपुट आसीबो a डॉट b बार इनटू a dot b bar whole bar. Here we will get similarly b dot b sorry a dot b whole bar. Okay, एमदी whole bar आसीबो. For this whole bar को यदि extract करिवो you will get the exclusive OR gate. Exclusive OR gate रो output कोन? What is the output of exclusive OR gate? That is the a bar b plus a b bar. Okay, तो याकू सॉल्व करियो बुलियन एक्सप्रेशन याकू अप्लाई करियो अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम. फर्स्ट गुटे अप्लाई कर दोजी बाकी निजे ट्राई करियो. ओके, अप्लाई करले कोन आसीबो दिस बार गुटे जे बार अछि गुटे बार नाही सो इट विल बी बिकम फर्स्ट दिस बिकम a bar plus a dot b. Okay, similarly over here it will becomes b bar plus a dot b. And if you apply these two, if you apply a bar रहिबो नै. Okay, this is the अरे कोन हेला ए दीटा को इरेज पड कहीं आछि. ए दीटा को तुमे पूरी गोटे बार रे पकेइबो तो you will get the output a bar b plus a b bar. एडा मिलिबो. This is the output you will get. Okay, that is the OR gate. Okay, and OR को XOR करिया कहले similarly do this for the last one also. Gate number mind रखिबो. Gate number कोडा कोन दियो छै number. NAND to XOR is 4. NAND to XNOR is 5. Similarly looks over here. NAND to XOR is 5 or to sorry NOR to XOR is 5.
ये देखो नॉट टू एक्सर 5 एक्सर नॉर रु एक्सर कले 5 5टा गेट लागिवो सिमिलरली नैंड टू एक्सर कले 4टा गेट लागिवो माइंड रखि दियो तापर हला देखिबो ये जो स्ट्रक्चर अछि कि इफ यू कंपेयर दो स्ट्रक्चर लेट मी इरेज एवरी पार्ट्स ओवर हियर सो पार्ट इरेज कर दउची हां देखो इफ यू लुक ओवर हियर देखो ये जो ये कोन गला नहीं रे दिस पार्ट लुक्स ओवर हियर ये जो स्ट्रक्चर अच्छी और एक्सक्लूसिव और सिमिलर स्ट्रक्चर अच्छी एक्सक्लूसिव नॉर ये नॉर पाई ये नॉर पाई ये नैंड पाई कीप दैट इन माइंड सिमिलरली एक्सक्लूसिव नॉर जोटा अच्छी ता स्ट्रक्चर सिमिलर रहइबो एक्सक्लूसिव और दिस इज फॉर नॉर एंड दैट इज फॉर नैंड ओके बाकी काउंटिंग सेम रखिबो माइंड रे आ कोन तार 5 हेबो 4 ही जिवो गोटे क्वेश्चन भी थिला ना ऊपर we have another question over here कोड केते गेट लागिबो कहितला हां ताको देखियो दैट्स इजी वन this is the end of first chapter unit 1 रे इंपोर्टेंट कहि दउजी तुमको इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु हमें इंपोर्टेंट डिस्कस भी करिवा विल डिस्कस द इंपोर्टेंट आल्सो यूनिट 1 रे तमरो अछि इंपोर्टेंट यूनिवर्सल गेट क्वेश्चन आसीओ यूनिट 1 रे इंपोर्टेंट होची यूनिवर्सल गेट क्वेश्चन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीओ नेक्स्ट वी हैव 2 mark question you will get 2 mark question from different logic gates जोड़ा अछि जोड़ा कि तुमरो ये थिला or gate and gate देखिबो draw the symbol and truth table एगुडा जो अछि this type of question next we have हिंदी question में आसी बारे this type of question you will must आसीबो एग्जाम रे बाकी देखिबो कोन इजी क्वेश्चन गुडा अछि जानू तो नेक्स्ट वन चैप्टर 2 को जीवा जोड़ा डिस्कस करवा पार्ट ता डिस्कस करवा रेस्ट विल स्किप ओके जोड़ा तुम निजे पढ़ी पारिबो नेक्स्ट डुअलिटी प्रॉपर्टी कोन कहू देखिबा डिफाइन डुअलिटी प्रॉपर्टी इज प्रिंसिपल इन Boolean algebra where a valid expression can be transferred into its dual by swapping and an or operation exchanging 1 to 0 and an or operation रे if you look at the and operation and देखियो टिके साइड रे देखि दउ जी जस्ट तुम्हार बुझिया पई for the and operation this multiply and माने multiply a into b माने 0 into 0 ये कौन है 0 into 0 0 0 into 1 0 0 1 into 0 1 sorry 0 1 into 1 it's 1 ना 0 0 0 1 as output for similarly for a plus b रो देखिबा तुम जदी a plus b रो देखिबा this will be 0 1 1 1 तार उल्टा थिबो is it 0 0 1 अछि ये 0 1 1 अछि so if you look at the and or operation it will be alter for each other यदि साइन चेंज कर दबो 0 को 1 कर दबो तो सिमिलर आउटपुट पाइबो ओके पाइबो ना नहीं यदि देखो एडे मु 0 को 1 कर दो 1 into 1 फर्स्ट ये 1 हे जिवो ये 0 0 0 ये भी अल्टर हे सिमिलरली देखो ये 1 लेस 0 0 0 दैट इज द डुअलिटी प्रॉपर्टी ओके तापर देई जी एसोसिएटिव लॉ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ Boolean algebra एसोसिएटिव लॉ देई ये पढ़ी जा मैथ है तुम्हें this is from math a into b plus c b a into b into c equals to a into b into c a plus b into c equals to a plus b plus c ये गुडा इजी पार्ट एटा निजे पढ़ियो ओके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ Boolean algebra प्रूफ देछि कि प्रूफ करिवा को कोन अछि इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये देखो ये पार्ट को स्प्लिट करी कि पार्ट बनै छी आ कोन ओके अगेन आउ तुम यदि चाहिए को ट्रुथ टेबल हिसाब से भी प्रूफ करि पारिबो एबीसी एबी एंड एसटी नै की ओके यदि ए पार्ट्स कहबो फर्स्ट पार्ट देखो डिस्ट्रीब्यूट करि छी सेकंड पार्ट देखो दिस इज द a into a है छी सेकंड पार्ट देखो a into a फार्मूला राइट साइड देखि छी a into a b into a आगोन ट्रांसफर करि छी कि ना तापर ए दीटा पार्ट रो कॉमन नै छी दिस इज 1 plus c over here similarly a plus this part common नहीं तापर देखो ये दीटा पार्ट रो a common नहीं ची ये दीटा पार्ट रो a common नहीं ची you'll get this one तापर 1 plus a कितना आइडेंटिटी लॉ अछि लॉ गुडा को निजे पढिबो 1 plus b equals to 1 1 into a equals to a एडा देखिबो ताको अप्लाई करि कोछि इजी पार्ट गुडा को एडा निजे तुम पढि परिबो ओके व्हाई इज मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट फंक्शन रिक्वायर्ड मिनिमाइजेशन काई दरकार जनरल क्वेश्चन देखिबो मिनिमाइजेशन हमु काई दरकार व्हाई वी नीड मिनिमाइजेशन करले कोन हबो
कम सर्किट लगिवो and jaldi you will get the output. So minimization function is required in order to reduce the cost of circuit. Cost तर कम circuit लगिवो cost and complexity and improve reliability. Okay, fast से function करिवो, it will function very fast. What are the AND laws of Boolean algebra? AND law दिया है देखो multiplication law गुड़ा को 0 संगे multiply हेले 0 ही जीवो 1 संगे multiply हेले same ही जीवो a into a गुड़ा को ऊपर भी apply को रही छी. For the OR case you will get 0 संगे ऐड करिवो सेम वैल्यू रहिवो 0 संगे 1 संगे ऐड करिवो 1 ही जीवो ये इंपोर्टेंट 1 संगे ऐड कले 1 ही जीवो एमती a संगे a into a होतला a plus 1 1 हबो a plus a and a into a will be same ये देखो बोथ सेम अछि. ओके इधर किसी डिफरेंस नहीं. What are the two forms of Boolean expression? A important one, A important part asila. First one is SOP, sum of product or product of sum. जोथिरे कि sum मानकर product हबो. ହେଲା SOP रे you will get product of sum of product. Okay, माने AB plus CD एमिति parts आसीबो for SOP. And for the POS you will get A plus B into C plus D. ये दिटा टाइप structure पाइबो. This is the POS form, this is the SOP form. Okay, A plus B plus की multiply हबो आउटे multiply की plus हबो. Next, define don't care condition. Already we had gone through this part. What is don't care? A don't care condition in digital logic refers to an input combination of for which the output value is not specified and can be either 0 or 1. Okay. Don't care condition रे कोन हबो से 0 ही पारे और 1 ही पारे. Okay. A don't care condition in digital electronics refers to an input combination for which the output value is not specified and can be either 0 or 1. Okay, 0 or 1 ही पारे. एटा ऑलरेडी हमें डिस्कस कर जोड़ा के मैप रे पढितला. लाइक डोंट केयर कंडीशन से खाली 0 1 किछि भी हे पारिबो बट तार किछि स्पेसिफिक वैल्यू न थाए ताकू क्वेश्चन दे करिले इजी हेबो. ओके के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड टेक्नोलॉजी टू सिंपलीफाई बूलियन एक्सप्रेशन. के मैप गोटे ग्राफिकल मेथड अछि ताको हम आगरु नेक्स्ट क्वेश्चन आसिले सॉल्व करिया. ओके नेक्स्ट मिनिमाइज द बूलियन लॉ दिस यूजिंग बूलियन लॉ यूज करी की आको मिनिमाइज करिवा. क्वेश्चन दै छी फर्स्ट क्वेश्चन देखो ए बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी. ओके ये तो ब्रैकेट अच्छी बडमास अप्लाई करी फर्स्ट ब्रैकेट खोलियो फर्स्ट दिस इक्वल्स टू यदि ए पार्ट देखियो नेक्स्ट इंप्लाइज खाली ए पार्ट देखो ए पार्ट ए भी तो सेम रहिबो प्लस बी सी मल्टीप्लाई हेबो बी बी सी प्लस बी सी सी. ओके सी इंटू सी ही जीवो बी इंटू बी ही जीवो दैट इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी. दिस ऑल्सो सेम ए प्लस ए फॉर्मूला पकेबो ए ही जीवो दैट इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी. ए देजी कि ए प्लस बी सी और इधर कौन कॉमन नहीं बी नहीं कॉमन नहीं इधर से ए प्लस सी. ओके सेडा ही देजी ऐसा नो इजी एटा इजी फॉर्मेट इजी क्वेश्चन गुडा. ओके जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करछि जस्ट मल्टीप्लाई करछि जनरल मैथ. तापर देखिबा व्हाट इज द सिंपलीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन. ओके ये गुडे क्वेश्चन देछि भलो क्वेश्चन देछि क्वेश्चन देछि अच्छा क्वेश्चन दीट देछि अलग अलग. अ सिंपलीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर ए गिवन बूलियन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन. द सिंपलीफाइड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल सम और प्रोडक्ट टर्म एगुडा को पढिबो एटा इजी किछि ते डिफिकल्ट किछि नै. तापर होछि सिंपलीफाई द फॉलोइंग बूलियन लॉजिक गेट्स एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करबा. लुक्स ओवर योर लेट्स सी हाउ इट इज सिंपलीफाइंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ताको तार वैल्यू बाहर करिवो. ये सर्किट देखो लुक ओवर योर सर्किट देखो सर्किट वैल्यू बाहर करिवो. फर्स्ट सर्किट रे ये गेट 1 2 नंबर लिखि दउ 3 4 5 6 7 सात सर्किट अछि. फर्स्ट रे आसीबो ए डैश सेकंड रे आसीबो सी डैश इधर आसीबो ए डैश डॉट सी डैश होल डैश तापर आसीबो दिस इज अल्टीमेटली ए हे जीवो ए प्लस सी हे जीवो एटा. तापर नेक्स्ट वी हैव ए गोटे बी डैश अछि दिस पार्ट विल बी बी डैश ए प्लस सी इंटू बी डैश इंटू ए प्लस सी. नेक्स्ट वी हैव ए लास्ट रे अछि ए बी सी समस्त अछंती दिस इज ए बी सी. तो लास्ट गेट रे आसीबो
ए बी सी प्लस बी डैश इंटू ए प्लस सी कौन सॉल्व करिछि देखिवा ए बी सी प्लस ए बी डैश अच्छा पूरा देइछि कि इधर ए बी डैश क्वेश्चन देइछि ए बी डैश प्लस ए डैश डैश प्लस सी डैश डैश ओके तो ब्रैकेट फर्स्ट खोली किए मल्टीप्लाई करिछि ए बी अच्छा लिखि देले प्रॉब्लम फर्स्ट वन देखो कौन एते बड़ा लाइन आछि look at the first one এটা দেখো first one abc plus ab dash a double dash plus c double dash ये ताको सिंपलीफाई करिनी हम जदि सिंपलीफाई कर देला इट ऊपर it doesn't simplify the terms तो यार terms देखिबा केमति करछि क्वेश्चन आंसर रे ओके तो एथिरे just that fellow is applying De Morgan's theorem looks over here ए बी डैश जस्ट ब्रैकेट खोली की मल्टीप्लाई करिछि देखो फर्स्ट दीटा पार्ट मल्टीप्लाई करिछि तापर याकू या संगे मल्टीप्लाई करिछि जस्ट दिस फेलो मल्टीप्लाई दोस पार्ट्स सो एटा मिलला मल्टीप्लाई हैला परे तापर अछि दीटा अछि फर्स्ट पार्ट रे देखो दीटा एड अछि तापर ए बी डैश सी विल बी सेम दीटा ए हेगी ए हे जाइछि ओके दैट इज द लुक फॉर द नेक्स्ट पार्ट ए बी सी प्लस ए बी डैश सी सो वी विल गेट ए दीटा थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन नहीं AC कॉमन जीवो b plus b dash equals to 1 so AC plus AB dash is the answer AC plus AB dash a कॉमन गले a into C plus B dash that is the answer okay जो सिंपलीफाई हम को आसिन साइड में कर दउची देखो a b c plus a b dash into a double dash plus c double dash that is imply normally AC he jibo a b c plus a b dash आगे multiply habo that is equal to a b dash plus a b dash c dash a b dash c okay now look the terms a dita terms देखो first and third AC common jibo b plus b dash plus this a becomes a b dash okay b plus b dash equals to 1 that implies AC plus a b dash if you common take a over here it will becomes b dash plus c okay देखि दिया उतरे कोइ दउजी फर्स्ट टर्म रे जस्ट मल्टीप्लाई करिछि ब्रैकेट खोली की जस्ट a डबल डैश c डबल डैश रा फार्मूला यूज करिछि दिस टू पार्ट्स a डबल डैश इक्वल्स टू a c डबल डैश इक्वल्स टू c ओके एमिति भी डबल डैश लिखा जाए एमिति भी डबल डैश लिखा जाए दैट इज बोथ आर सेम this is also easy question now look for the canonical form obtain the canonical form of SOP POS from the function of y equals to a plus b dash c okay it is important question ये होची important one exam रे मोर probability बहुत हाई होची यार अस्सीवर look over here canonical form माने कोन what is canonical form first देखि देवा canonical form SOP तमर जो क्वेश्चन करतलो सेतिरे in the bracket in the summation of m into 0 1 2 3 करी केमते जो के मैप रे क्वेश्चन थाए ओके दैट इज द canonical form माने कोन it has to be सबु टर्म रे तार SOP यदि देखिबो SOP रे canonical form देखिबो सबु टर्म्स रे देखो canonical form देखि दियो a b c यदि अछंती सबुतरे a b c देबे a b dash c dash a b dash c एमदी सब 8 टर्म्स थिबो if it is POS it should be like a plus b plus c into a plus b dash plus c dash this type of form is known as canonical form okay माने सबु टर्म्स रे सबु अननोन थिबे तो सेमती करिया देखो क्वेश्चन देखो लुक ओवर हियर फर्स्ट देछि a y equals to a plus b dash c okay टर्म्स अछि हम पकरे फर्स्ट क्वेश्चन अछि फॉर द SOP बाय क्वेश्चन अछि क्वेश्चन कोन अछि a plus b dash c a plus b dash c ये क्वेश्चन अछि हला हम कोन करिवार छी we have to put कोन करिवार छी पुट करिवार छी सबुतरे abc हमर दरकार सबुतरे कोन दरकार abc दरकार to get those abc we will multiply simply देखो a पाखरे किए नाही देखिबो
टर्म्स वेरी ये बहुत इजी फॉर्मूला इजी करवा क्वेश्चन जहाँ पाखे जी ना देखिए फर्स्ट प्लस टर्म अच्छी प्लस टर्म ए साइड गोटे टर्म्स अच्छी राइट साइड गोटे टर्म्स अच्छी दैट इम्प्लाइज ए संगे मल्टीप्लाई करिवो ए संगे जे नहीं के नहीं बी नहीं सी नहीं तो विल मल्टीप्लाई बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश राइट टाइम रे राइट साइड रे बी डैश प्लस सी अच्छी ता संगे हम मल्टीप्लाई करबा ए प्लस ए डैश cos देखो ए बी प्लस बी डैश रो वैल्यू कोन 1 सी प्लस सी डैश रो वैल्यू कोन 1 ए प्लस ए डैश रो वैल्यू कोन 1 ओके तो 1 1 हम मल्टीप्लाई करछु बेसिकली तापर कोन अछि दैट इंप्लाइज ब्रैकेट खोलिबो जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग्स ए बी प्लस ए बी डैश फर्स्ट एटा पार्ट मल्टीप्लाई करछि इनटू सी प्लस सी डैश प्लस ये मल्टीप्लाई करबा ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी हैला ए दीटा पार्ट रु ए आसीला दीटा पार्ट आ ऊपर पार्ट को जस्ट वन टाइम मल्टीप्लाई करछि वन टाइम मल्टीप्लाई करछि एतिक मिलला तापर या को आउ थरे मल्टीप्लाई करबा लुक्स ओवर हियर दैट इंप्लाइज ए बी सी प्लस ये मल्टीप्लाई या संगे रहबो प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश हैला दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म आउ टिके लास्ट दीटा पार्ट भी लिखि दबा लास्ट दीटा पार्ट एटी ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी हैला तुमर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैला जेंति क्वेश्चन लुक्स ओवर हियर सॉल्यूशन देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन कहि दउची आ थरे ताको स्पीड लागुची कि प्रॉब्लम होची ताको बैक करो पुनी देखो ओके नथिंग टू वरी ए याकू देखो लुक ओवर हियर y इक्वल्स टू a प्लस b डैश c लुक्स ओवर हियर a संगे फर्स्ट a पार्ट रे b c नहीं सो ही मल्टीप्लाइड b प्लस b डैश c प्लस c डैश तापर लास्ट b डैश c पार्ट रे a नहीं तो इट मल्टीप्लाई a प्लस a डैश तो ए मल्टीप्लिकेशन को तापर जनरल मैथ करबार अछि या पर डू जनरल मैथ जनरल एल्जेब्रिक मैथ जस्ट एल्जेब्रिक मैथ रे स्टेप बाय स्टेप खाली मल्टीप्लाई ही करि जी से ओके सिमिलरली ओवर हियर देखो एई पार्ट रे हम ऐड करि मल्टीप्लाई करतला एई जगह रे मल्टीप्लाई करि ऐड करबा देखो दिस सपोज टू बी फर्स्ट याकू तुमरो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करि a प्लस b डैश c इक्वल्स टू a प्लस b डैश इनटू a प्लस c याकू यदि सॉल्व करिवो यू विल अल्टीमेटली गेट दिस पार्ट ये तुमको कंफ्यूजिंग लागि पारे फर्स्ट पार्ट टा और इरेज कर दउची this part seems to be confusing for you but it is just a distributive law apply करिछि एटे distributive law टा apply करिछि okay just applied the distributive law तापरे कोन करिछि distributive law परे तापरे देखो फर्स्ट टर्म देखिबो इट हैज a प्लस b डैश तो हमको कोन दरकार गुटे पार्ट c दरकार इट मल्टीप्लाई इट ऐड c डैश थर्ड सेकंड पार्ट देखो a अछि c अछि b नहीं इट मल्टीप्लाई इट ऐड b प्लस b इंटू b डैश तो पीओएस रे तुम्हें ए डैश बी डैश सी डैश एमती पार्ट ऐड करिवो ये कोन करिवो ऐड प्लस करिवो एसओपी रे जोटा नथिवो ताकू ऐड फॉर्म रे मल्टीप्लाई करिवो कीप दैट इन माइंड इन एसओपी यू विल ऐड इन पीओएस बट यू विल ऐड a plus a dash this type of multiply in POS sorry SOP दीटा पार्ट कैनोनिकल ए कोन कैनोनिकल टू नॉन कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टू कैनोनिकल करिया पई एमदी ये एत्ती ही करा जाएगा हम ओके विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट प्रूव द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सेम क्वेश्चन कोन दी a into b plus c स्टेप बाय स्टेप बतै दउची स्टेप देखिबा कोन अछि a into b plus c into ab plus c ac dash bracket रे dash देछि so it is a whole dash a dash जो देछि this is a whole dash complete dash तो ये क्वेश्चन लिखि दीजिए देखो फर्स्ट पार्ट तो ए पार्ट को सॉल्व करिए देखो फर्स्ट देखो स्टेप रे फर्स्ट स्टेप देखो लुक ओवर हियर ए स्टेप कॉमन अछि केते जाय कॉमन अछि देखो एत्ती जाय कॉमन अछि so we will only see the last part ab plus ac whole bar ab plus ac whole bar यदि if you apply डिमॉर्गन्स थ्योरम कोन कहि छै a plus b whole bar equals to a bar dot b bar a bar dot b bar this is the boolean ये मोर डैश लिखिवा आदत है जे मोर
a plus b whole bar equals to a bar dot b bar. So सेटा ही apply करूँ देखो एड़ा apply करूँ from this you will get this तापर याकू expand करूँ तापर ये b plus c को ये individually apply करूँ देखो a b bar a c bar apply करूँ a b bar रू पाइला से for the a b bar you will get a bar plus b bar. Similarly from a c bar you will get a bar plus c bar. Only De Morgan's law ही apply करूँ किसी नुआ नहीं इधरे. It doesn't have anything new. Just apply the De Morgan's theorem. Okay. तापर अच्छे हमारा we have next what we have just तापर multiply कर जी look over here a bar plus b bar जहाँ भी अच्छी जो part असिला this part multiply कर जी तापर b plus c संगरे you will get over here looks over here देखो याकू देखो it is just multiply with b and c तापर कौन सॉल्व कर जी इची सॉल्व कर जी a bar into a bar a b bar b c bar ये जहाँ भी अच्छी part अच्छी now it will apply ए बी प्लस सी जो अच्छे दीटा टर्म्स बी को अप्लाई करूँ ए पार्ट संगे फर्स्ट रे सी को अप्लाई करूँ सेम पार्ट रे सेकंड पार्ट रे नेक्स्ट यू हैव मस्ट जस्ट मल्टीप्लाई करूँ बी इंटू ए डैश एगुड़ा जनरल मैथ देखिए एगुड़ा तो किसी नुआ ना ओके सिंपली मल्टीप्लाई ही करूँ मल्टीप्लाई गला परे लुक्स ओवर हियर जोटा सिमिलर टर्म्स अच्छे सिमिलर टर्म्स ताकू टे काटी देइछि ओके ए बार सी प्लस ए बार सी सी ए दीटा सेम अच्छी ये दीटा सेम अच्छी ताऊ कैंसल आउट करिछि for the end result you will get end result if you look over this expression a plus a bar b format रे अच्छी this ultimately becomes 0 a into a bar ये देखो ये a बार संगे मल्टीप्लाई हेछि a b बार संगे मल्टीप्लाई हेछि a b बार संगे मल्टीप्लाई हेछि a b बार संगे मल्टीप्लाई हेछि we know that a into a bar equals to 0 a गोटे फॉर्मूला अप्लाई करिछि से at the end to get the output. Okay, that's all from this Boolean expression question. Next, jump below. Simplify the following expression using K map. Implement unique universal gate. ये होची important question. ये आसीबो exam रे. Okay, look over here. ये K map करिछि for 3 variable. 3टा variable पाई. I told you about 4 variable K maps. 3 variables रे अछि केमति अछि देखो 3 variable. If you look at the basic diagram of 3 variable K map, यदि गोटे basic diagram देखिबा follow up करिबा for 3 variable, you will get 3टा वेरिएबल फाइ हाईएस्ट नंबर होची 111 दैट इज 7 तो तुमको मिलिबो 7टा आउटपुट यू विल गेट 0 ओवर हियर 1 ओवर हियर 0 0 0 1 1 1 1 0 दिस सपोज टू बी 0 0 0 फर्स्ट ब्रैकेट रे 0 0 1 सेकंड ब्रैकेट रे 0 1 1 थर्ड ब्रैकेट रे फोर्थ ब्रैकेट रे 0 1 0 सिमिलरली हियर 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 okay if you check in case of number this is supposed to be 0 1 3 2 4 5 7 6 okay that's the basic structure of a 3 variable K map a b plus c okay ये तो एटा POS फॉर्म रे देइछि p plus c फॉर्मेट रे लिखिबो we will make the value of 0 क्वेश्चन कोन कोन देइछि क्वेश्चन रे क्वेश्चन we have 0 2 3 4 like direct solution ही देखि दियो this is 0 part this is a 2 part 3 part 2 3 and 4 okay तो ये 0 एटा ग्रुप गुटे ग्रुप 1 ग्रुप 2 POS फॉर्म देइछि इट्स अ POS फॉर्म पाई लिखि देखियो देखो ई दे मैक्स टर्म पाई दैट्स व्हाई इट्स अ POS फॉर्म ओके तो जस्ट एको सॉल्व करिछि विल गेट द आउटपुट फर्स्ट ग्रुप रे मिलिबो तुमको b plus c सेकंड ग्रुप रे मिलिबो a plus b dash okay to implement this using NOR gate पाई b plus c करिवा पाई b c you will get b plus c over here looks like first देखो b को b dash करिछि एटी रे this b dash this is a ये कोन this first gate a gate देखो gate number 1 you will get b dash for the gate number 2 you will get a plus b dash whole dash for the third gate देखो b plus
C dash. Okay, for the ultimate get you will get B plus C into A plus B dash. Cause देखो इधर डैश डैश ले डैश रो डैश उठीबो ए क्वेश्चन रे जो छी y पार्ट रे अछि यार डैश रो दुईटा डैश आसीबो दुईटा डैश कैंसिल आउट होइबो वी विल अल्टीमेटली गेट दिस जे बुझी न पारला इंडिविजुअली ताको सॉल्व करबा को ओके यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग याको आउथरे हमें नहले एंड सेशन रे कर दबा b plus c a plus b dash विल डू दिस इन क्लासेस जदि याको बुझी न पारिबो गेट केमिति कन्वर्ट हैला बाकी तो आउटपुट लिखि देछि दिस द output for the gate 1 the output for the gate 2 gate 3 this is the ultimate output जो तरह के दीटा बार आसीओ ओके ओके नेक्स्ट नंबर 10 मार्क क्वेश्चन तापर देखबा 10 मार्क क्वेश्चन simplify and minimize the four variable logic expression for f p q r s where the min terms is 1 2 3 1 3 4 6 8 9 11 13 15 and don't care जे अछि 0 to 14 8 आसीबो तमर फाइनल क्वेश्चन 10 मार्क क्वेश्चन keep this in mind it will be your final question okay तो हमें फर्स्ट कौन करिया को फॉर्म चेक करियो m अछि min terms that is supposed to be your sop form sorry sop form m माने sop pi माने pos keep that in mind okay we have the sop over here so we will solve this first draw करिया basic gate basic k map रो टेबल ड्रॉ करियो फॉर ए फोर वेरिएबल कितना वेरिएबल अछंती pqrs चारटा वेरिएबल अछंती तो विल ड्रॉ ए बेसिक okay next we have 0 0 over here 0 1 over here 1 1 over here 1 0 over here similarly 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड फॉर्मेट रे था एटा this is your pq over here rs over here pqrs देखि ना वेरिएबल रे yes it's a pqrs तापर जस्ट लिखिबो डोंट केयर को जगह अछि मझिरा भीतर लिखि दउछि दिस इज योर 0 1 3 2 4 5 7 6 9 10 12 11 13 14 13 14 15 16 ये केम देवला 8 छाड़ देला ना एहे 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 this is the basic structure of a k map तबे जोटा दे पुट करिवो फर्स्ट वी हैव के दो कोड दे देखो डोंट केयर दे 0 to 14 0 to 14 0 रो डोंट केयर 14 रो डोंट केयर ओके अछि 2 रो डोंट केयर these three are don't care next we have what we have तबे दे 1 3 4 6 8 9 1 3 4 6 8 9 1 3 1 जो जगह रे देई छी min terms ता जगह 1 लिखिबो 1 जगह 1 देई छी 1 3 जगह 1 देई छी 1 4 6 1 6 1 8 9 8 9 1 11 13 15 11 13 15 this is the one terms एतिकी देई ना next we will make groups डायरेक्टली देखो चारटा गोटे ग्रुप देखा जाउची ग्रुप नंबर 1 तापर अछि if you make side groups it looks to be ये चारटा गोटे ग्रुप बनिबो देखो अच्छा वर्टिकल ग्रुप 2 और तीनटा रहिले ना तीनटा रहिले दिस पैरामीटर एंड दिस पैरामीटर ये चारटा गोटे ग्रुप बनिबो 3 नेक्स्ट ये चारटा गोटे ग्रुप बनिबो 4 the four groups okay this group definitely one group रे मिलिबो हमको one group रे if you take common from these two and these two one group रे first group रे मिलिबो for first group will get कोन मिलिबो ऊपर मिलिबो d part जोटा d फॉर्म रहइबो pqrs फॉर्म रहइबो नेक्स्ट लेफ्ट साइड रे मिलिबो p part p फॉर्म रहइबो ps group 2 रे मिलिबो if you look at the group 2 it's a vertical group so we'll remove all the horizontal component so you will get only p dash q dash group 2 group 3 देखिबो this is the group 3 एटा group 3 तमरो group 3 देखिबो 3 equals to ऊपर रहइबो r रहइबो डैश फॉर्म रे लेफ्ट साइड रहइबो
Q रे dash form रे R dash Q dash. For the fourth group we will get fourth group. हमर fourth group रे कोन मिलवा देखिवा. For the fourth group, this is the fourth group. Fourth group, 4 number. This two, this two, this two, and this two. This is the fourth group. The fourth रे मिलवा हमको left रे मिलवा P dash. Right side रे मिलवा ये ऊपर दीटा देखियो ऊपर दीटा same अच्छी D dash R S dash. So this is the output. The output will be PS plus P dash Q dash plus P dash S dash plus R dash Q dash. Okay. How कौन दीजिए PS plus P dash Q dash plus P dash R dash. हाँ आंसर इज करेक्ट. ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି 1 2 3 4 A1 2 3 4 ଏ ଚାରଟା ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ବନେଇଛି. नेक्स्ट वी हैव अनदर ओवर हियर जोथिरे कि 1 2 3 4 जेमिति गले भी सलिबो. ओके ताकू नेकी गेट बनेबो यूजिंग NAND गेट देजे कि ये गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट वन. ताकू NAND गेट फॉर्मेट रे करबा कन्वर्ट इज वेरी देखो लुक ओवर हियर केमति NAND गेट रे कन्वर्ट करिछि याको लुक्स ओवर हियर NAND गेट कन्वर्ट करबा देखियो पड़िबो एटा डी इंपोर्टेंट वन. implement circuit use NAND gate एमिति क्वेश्चन काई देउछि. It's one of the trick question. Trick question दीजिए थे तेरे प्लस टू डॉट कन्वर्जन बुझा पड़ो. इजी इजी डिफिकल्ट नुह. ये जो पार्ट देख लुक्स ओवर हियर ये पार्ट देख मुझे एक्सप्लेन कर दूसरी है याको तो डीपली गले तुम प्रॉब्लम हम एग्जाम पाखे अच्छी डिफिकल्ट नुह. लुक्स ओवर हियर ये पार्ट गुड़ाक देख फर्स्ट PS P dash Q dash P dash S dash Q dash R dash 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 तीन पार्ट अच्छी एंड नॉर्मल पार्ट गुटे अच्छी ताको केन भी कन्वर्ट कर देख. नेक्स्ट पार्ट है डबल डैश देगी डबल डैश आउ सेम डैश वैल्यू A डबल डैश इक्वल्स टू A सी फॉर्मूला पुट कर सेकंड लाइन रे देख PS डबल डैश इक्वल्स टू सेम P dash PS डबल डैश तापर देछि PS को देखो प्लस को डॉट रे कन्वर्ट कर प्लस टू डॉट. इफ यू लुक दिस वर्ड इट्स कन्वर्ट प्लस टू डॉट प्लस टू डॉट प्लस टू डॉट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर PS प्लस P dash Q dash PS बार ये देखो डैश टा बार है जार बार अच्छी तार डबल बार है कि उठी जीवो. डबल बार जस्ट लिखी सिंप्लीफाई गेट बनेवा पाई. तो देखो इजी एड़ा इजी. हाँ इजी डिफिकल्ट नुह. देखो ये पार्ट देखो PS P dash Q dash plus P dash S dash plus R dash Q dash जो अच्छी if you convert this to a proper NAND gate तो दीटा बार दे देवो इक्वलाइज हो दीटा बार देला परे ये अल्टीमेटली P dash S बार रही जबो डॉट PQ बार बार PS डबल बार डॉट डॉट है सब डॉट RQ बार बार एमती देजी देखो. दिस इज द इजी सॉल्यूशन. ओके जोतिर बार नथिबो ताक से गोटे बार लगेबो जोतिर थिबो दीटा बार लगेबो दैट इज द सॉल्यूशन. तापर गेट बनेबा इज वेरी इजी फॉर PS बार तो डायरेक्टली बने पारिबो NAND गेट P बार Q बार पई ये देखो ये थ्री टर्म्स ये यूनिवर्सल गेट उठे तीनटा पार्ट देखो सेम गेट दिस थ्री आर सेम गेट 1 2 3 आर सेम गेट है तीनटा पार्ट उठेला परे ये सब पार्ट जेते ऑल टाइम आसीबे तापर वी कैन इंप्लीमेंट दिस यूजिंग ए NAND गेट. इट्स ए 4x1 NAND गेट. ओके ये जो डिफिकल्ट लगिला आउ थरे देखि देबा को. ओके जदि ये पार्टटा डिफिकल्ट लगिला आउ थरे ताकू देखि देबो. We learn to the next part. एमदी क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे. कीप दैट इन माइंड. Simplify the Boolean expression A dash B plus A dash B into D dash C dash D plus B into A plus A dash C D. Here's the question. A dash B into D dash plus C dash D plus B into just A kind of bracket खोलिबो easily solve हेबो. Look over here. मो इधर स्टेप बाय बते दउजी एतरे किछि कंफ्यूजिंग ये पार्ट नाही. देखो
just open the bracket, ये b ब्रैकेट खोल लीजिए, देखो b ब्रैकेट खोलला पर ये एमती आसीबो। फर्स्ट देखो ये पार्ट को एटा गुड पार्ट तुमको बुझे पड़ो, दिस इज द इंपोर्टेंट वन। a प्लस ए बी a plus a dash b c एमती यदि एक्सप्रेशन अच्छी, you can write down a plus a dash into a plus b into a plus c, ये डिस्ट्रीब्यूट बुलियन अलजेब्रा ये जानियो पड़ो। एमती ये देखो फर्स्ट टर्म को जोटा मु अंडरलाइन कोइ सेति की देखो, looks over here, a part को दीटा पार्ट कन्वर्ट करछि, दिस इज द पार्ट 1, द पार्ट 2, ये बुझिया पड़ो, कीप दैट इन माइंड। सिमिलरली ओवर हियर ए डी सी से देखो ए पार्ट को दीटा पार्ट कन्वर्ट करछि, पार्ट 1 पार्ट 2, इजी एटा इजी सही भाई मु आपको सेपरेट करूनी। ओके तापर जस्ट मल्टीप्लाई ही करिछि से, जस्ट मल्टीप्लाई दोस टर्म्स, जनरल टर्म रे कन्वर्ट करिछि, जनरल टर्म यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग जनरल टर्म्स। यार भोल देखो यार वैल्यू 0 हो जिवो, यार वैल्यू 0 हो जिवो, सॉरी यार वैल्यू 0 हो जिवो, एदिटा पार्ट 0 होला पर यू विल गेट दिस सिंपलीफाइड टर्म। तापर जस्ट मल्टीप्लाई करिछि, देखो दिस मल्टीप्लाई दिस पार्ट्स, just multiply करके you will get different values over here। okay this a dash b plus c dash abd plus b common nechi dita parts ru you will get this part, and over here b common la pare you will get this part। याको पुणी देखो पुणी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करछि over here, a dash c dash plus a dash plus a into a plus a c dash। okay this is the distributive law, एडी जो ए पार्ट এই পার্টটা উপরে আসছে, দেখো over here, this is the part where it apply, just apply the distributive law। तापर सिंपली ये सॉल्व करिछि, आउ किछि नाही एतरे, बस मल्टीप्लाई करिकि पुणी कॉमन नै कि मल्टीप्लाई करिकि it solve those question। okay ultimately it becomes आउ किछि अछि कि b into b plus a plus ad dash ab plus bd dash कटिवो, bc dash plus bd रहिवो, bd रहिवो, तापर ab रहिला, bd dash रहिला, bd रहिला, bc रहिला, ab plus b कॉमन ले d dash plus d, d dash plus d, ये दिटा पार्ट कटिवो। नेक्स्ट ab into ये यदि कटिला सपोज टू 1, b into bc equals to b, so ab ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो b plus anything a plus ab equals to a फॉर्मूला यूज करिए लास्ट रे, and ultimately where it is getting b। एतिक सिंपलीफाई करिया पड़िबनी ए स्टेप रे भी तुम, इफ यू अप्लाई a plus ab equals to a then you will get ultimately b is the answer। okay एटा जदि बुझी ना हला I will explain this again। jump to the unit 3, combinational logic circuit। okay why multiplexer are referred as a data selector। multiplexer को data selector काई कहवा जाए, काई कि सेतरे चैनल थाए से डाटा सिलेक्ट करि पारता, सेते कि लिखा है multiplexer are called data selector because they use control signal to choose one of the many inputs data route to a single output line। पढिले जानिबो एटा इजी किछि नै इतरे। next we find out the number of input line, output line and selector line for 1:8, 1:8 माने 1 input 8 output DMOX, and 16:1 MOX। MOX रे आउटपुट 1 थाए, MOX रे आउटपुट 1 थिबो, DMOX रे आउटपुट मल्टीपल आउटपुट थिबो। ओके इनपुट 1 थिबो। looks over here, look at the answer for 1:8 demultiplexer you will get one input line and output line is 1:8, 1:8 माने कोन input 1 output 8, ये इजी। सिलेक्ट लाइन कोन, सिलेक्ट लाइन केमति जानिबो, 8 लाइन पई what is the maximum value for 8, it's 111, it's 111, यदि 111 अछि, if it is 111 then it's supposed to be 3 line, same the 16 पई 1111 highest value 15, that's why we'll get 4 line। सेति की डिफरेंस अछि, 4 line for 16, 3 line for 8।
ओके और 2 ର पावर नहीं भी तुम जानि परिबो 2 ର पावर 3 इक्वल्स टू 8 2 ର पावर 4 इक्वल्स टू 16 एडु भी जानि परिबो पावर इज द लाइन और द चॉइस तापर अछि नेम डिफरेंट हार्डवेयर एंड सबट्रैक्टर ये कोन क्वेश्चन दै छी ये पढ़िबो नि जे इजी क्वेश्चन कोन अछि रे ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर 4:1 मल्टीप्लेक्सर देखो it has 2 select line 4:1 by if you look at the select line आको बोले बुझिबा ये थाउ टिके आको गुटी पढिले बुझिबा okay define combinational logic circuit a logic circuit whose output depends only on the present input रे depends करे आउ कहा मेमोरी ऊपर लिंक करे नाही that is combinational logic circuit जोटा की current input रे डील करिवो doesn't depends on the previously कोन हितला डिवाइस रे आगरु कोन थिला डेटा कोन अछि ये सेगुडा को देखिबो नाही define half subtractor and full subtractor एगुडा को पढिबो एटा कोन अछि तो डेफिनेशन गुडा निजे पढिबो define half adder and full adder ए डेफिनेशन गुडा काई देइ छी एगुडा डायग्राम देबा कथा क्वेश्चन रे a half subtractor is a digital logic circuit that subtract two single bit dita bit by half subtractor tinta bit by full subtractor similarly duita bit by half adder tinta bit by full adder किछि नाही इतरे draw the full adder using two half adder ये important question आसीबो एग्जाम देखिबो 8 नंबर क्वेश्चन ये आसी देबो एग्जाम रे ये देखो ये होची फर्स्ट हाफ एडर ये होची सेकंड हाफ एडर जोतरे कि हम गुटे एंड गेट लगेले यू विल गेट द सॉरी और गेट लगेले यू विल गेट द आउटपुट ये तुम सम रो आउटपुट सम रे कोन a xor b xor c in एडा से एंड फॉर द कैरी आउटपुट यू विल गेट दिस वन इजी क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ये रिमाइंड करके जीवा ये क्वेश्चन आसीबो एग्जाम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनेबल inputs in a multiplier enable गोटे on off switch हिसाब रे काम करे enable on हेले तुम मल्टीप्लेक्सर काम करिवो what is decoder and what it used for decoder कोन से decode करिवो कोन तेरे कोन अछि a decoder is a conventional logic circuit that converts the n bit binary inputs into odd to maximum to the power unique output lines it performs the reverse function of an encoder transforming encoding data into a more usable format जेमदी तुम 1 को बाय 10 को बाइनरी केमती लिखो 1010 से 1010 को पूरी 10 कर दो पढ़िया पाई ये होची एनकोडर ये होची डिकोडर ओके ये ऊपर वाला एनकोडर तल वाला डिकोडर नेक्स्ट डिस्कस द 1:4 DMOX with circuit truth table and implement by gates ये आसला क्वेश्चन इंपोर्टेंट 1:4 हला गोटे इनपुट रहबो चारटा आउटपुट लाइन रहबो इट हैज देखो ये होची तार इनपुट ये तो जो आउटपुट लाइन एंड इतने सिलेक्ट लाइन थाए कीप दैट इन माइंड ट्रुथ टेबल को भलसे देखो फॉर द 1:4 ओके जोतरे कि चारटा आउटपुट आसीबो d0 d1 d2 d3 आ दुटा सिलेक्ट लाइन আছে सिलेक्ट लाइन माने काडा ए सिलेक्ट करिवो ओके 0 0 पई ये d0 को सिलेक्ट करिवो भलसे देखो फॉर द 0 0 it will select d0 for the 0 1 it will select d1 for the this is select d2 this will select d4 d3 similarly बुझी पारला 0 0 पई से सिलेक्ट करिवो 0 को 0 1 पई सिलेक्ट करिवो d1 को 0 1 0 पई d2 को similarly for d3 okay it will select similarly तो सेटा को नहीं कि ही गेट बना है देखो बोल से देखो इफ यू लुक एट द गेट्स फर्स्ट पार्ट देखो लुक्स ओवर हियर s0 sz इनपुट देखो बोल से देखो गोटे लाइन बुझे दउजी इजीली बुझी परिबो फर्स्ट आउटपुट देखिबा हमें लुक एट द फर्स्ट आउटपुट फिर आउटपुट केपे 1 हेबो व्हेन दिस d0 becomes 1 गोटे बुझिले सब बुझी परिबो लुक्स ओवर हियर ये डायग्राम देखो फर्स्ट दिस x0 कहीं आसुनी x0 आउटपुट पाई x0 पाई फॉर द x0 पाई कोन अछि देखो x0 पाई कोन दरकार x0 माने कोन ये d0 ऑन करिवो इट विल ऑन d0 what we are getting on d0 केबे ऑन होउची जेबे s0 s1 0 अछि s2 और s0 0 अछि s1 0 अछि s0 0 अछि दीटा 0 हेले d0 ऑन हो सो देखो सेम करा ही देखो फॉर दिस गेट एंड गेट पर कोन कोन लागि देखो ए s टा 0 है कि लागि छि एंड सिमिलरली s1 also 0 है कि लागि छि वेरी इजी टू ड्रॉ दिस गेट्स ओके तुम देखो 0 1 0 एमती फॉर्मेट भी लिखि परिबो रुको एक इरेज कर दउची बुझी परिबो भल से
देखो ये देखिए साइड रे दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1 एमती फॉर्मेट अच्छी ना looked over here s रो value ये जगह 1 1 1 1 it has 0 0 0 0 similarly s0 रो value it says 1 1 1 1 0 0 0 0 चार्टा 0 चार्टा 1 की फॉर्मेट से गुडा अच्छी सिलेक्ट करिवा हमर चॉइस अछि सिलेक्ट करिवा फर्स्ट x0 पई विल सिलेक्ट दिस फॉर x0 विल सिलेक्ट दिस 0 एंड दिस 0 सेट दिटा करेक्ट है देखो इधर 0 एटा नेक्स्ट 0 पई next for this x1 will connect 0 1 so first row 0 नबो s1 row 0 नहीं 0 from s1 and 1 from s2 for this third gate x2 we need to connect 1 0 so first s1 row a line row 1 नबो second line row 0 नबो similarly for the fourth gate both 1 so this one okay easy construction एटा this is very easy construction घुसियार किछि नाही रे को पढी के जीवो एंड आउटपुट जस्ट चॉइस थाए देखो बोल से देखो इट इज जस्ट चॉइस 0 0 0 1 1 0 1 1 मॉक्स रे सबु केस रे एम थाए मतलब आको को पढु न 1:4:1 अछि 8:1 16:1 जाहि पढियो सबरे भी सेमती चॉइस ही थाए नेक्स्ट डिजाइन ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर विथ नीट डायग्राम ये होछि इजी पार्ट डिफिकल्ट पार्ट किछि न मु ट्रुथ टेबल बनेबा सिखाउछि तुमको देखो एटा बीट देखो 8:3 एनकोडर जो अछि 8:3 माने कोन it will convert 8 bit to a 3 decode bit sorry encode bit okay तो इतरे रहिबो 8टा इनपुट रहिबो 8टा इनपुट 3 आउटपुट लुक्स ओवर हियर देखो यार डायग्राम बनेवा माने ट्रुथ टेबल बनेवा वेरी इजी लुक्स ओवर हियर ट्रुथ टेबल टी भल से देखो तुमरो स्क्रीन रे देखा जाय तो याकू देखो केमदी बनेबा देखो लेट मी कोड जगह रे गैप हेले बढ़िया होंता वेरी इजी देखो बनेबा को केमदी बनेबा देखो लुक्स ओवर हियर गोटे बने की देखा देखो y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 we have in output a2 a1 a0 है for the output कौन करिवो we just put the choice output हम just choice put करिवा तीनटा वेरिएबल अछि we have different choice up to 8 so लिखिवा 0 0 0 0 0 1 0 चारटा 0 दे दो चारटा 1 दे दो दीटा 0 दीटा 1 दीटा 0 दीटा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हैला just the format and तापर कोन करिवो this first value पई ये 1 रहिवो ये 1 रहिवो सेकंड वैल्यू पई y1 1 रहिवो थर्ड वैल्यू पई y3 1 रहिवो सिमिलरली y3 फोर्थ वैल्यू पई फिफ्थ वैल्यू पई y4 फिफ्थ वैल्यू पई y4 सिक्स वैल्यू पई y5 sorry this is the value 5 6 value 7 value पई this y6 8 value पई y7 okay that's how माने diagonally 1 1 1 लिखि आसीबो रेस्ट को 0 0 लिखि देबो 1 2 3 4 5 6 करी 0 0 लिखिबो जा अछि ए बॉक्स देखो look at the box you will know बॉक्स देखले जानि पर टू टेबल देखले मिनिमाइज के होनी एड देखे जानते नाले देखो ए वैल्यू देखिबो this is 0 0 0 this value 0 this refers to 1 this refers to 2 this refers to 3 just choice ही एटा गोटा choice 4 5 6 7 7 नंबर choice 7 नंबर रे y6 on y7 on अछि 6 पाई y6 on अछि this is y7 y6 y5 y4 y3 y2 in diagonally jibo y1 y0 okay diagonally just draw a box diagonally एमती रहिबो y0 to y7 okay जदि सर्किट तार देखिबो सर्किट देखिबो फॉर द a0 पाई के को जार 1 अछि देखो a0 पाई a1 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 चारटा 1 अछि तो we have this a0 value it has first one second one third one fourth one okay for this a1 value a1 by कौन अच्छे ओके के कौन अच्छे देखो a1 by
A1 ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ମଝିରୁ ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟରୁ ଥିବେ 1 ତ A1 ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମଝିରୁ ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟରୁ for this A2 we have A2 ପାଇଁ କି 1 ଅଛନ୍ତି A2 ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ 4ଟା 1 ଥିବେ ତ ଲାଷ୍ଟ 4ଟା 1 କରିବ Y4 Y5 Y6 Y7 just for A2 ଏ ସାଇଡ଼ରେ লিখি ଦେଉଛି Y4 Y5 କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏ ଦେଖାଯିବ Y2 ପାଇଁ 7654 1 ପାଇଁ 7632 for this 0 ପାଇଁ 7531 ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବ ଆଉ କ'ଣ easy is also easy one. Design a half subtractor with the help of truth table and circuit diagram. A half subtractor is a digital circuit that performs the binary subtraction of 2-bit binary number. दुईटा bit ର subtraction करिवा looks over here 0 1 0 minus 1 0 sorry 0 minus 0 0 0 minus 1 1 borrow 1 0 1 minus 0 1 0 1 minus 1 0 just minus ही करा हीजिए कौन अच्छे इतने तो ये ऐप को नहीं देखिवा डिफरेंस रे देखिवा इफ यू लुक एट द डिफरेंस को जगह रे 1 है जे देखिवा ये गुड 1 अछि ये गुड 1 अछि फॉर दिस वन वैल्यू a is 0 a is a dash b is 1 फॉर डी नंबर 1 वैल्यू ए डी नंबर पई ये आसीबो 1 पई ये आसीबो सिमिलरली फॉर द बोरो वैल्यू गोटे 1 अछि यार गोटे 1 पई को कंडीशन रे 1 होजी देखो को कंडीशन रे 1 होजी देखो ये 0 1 पई A0 माने A dash B A0 माने A dash B that is the borrow condition so you will get this type of output for the subtractor ताको apply करिवो A dash B plus A B dash यार difference होची A dash B plus A B dash okay next we have borrow bit पई अछि A dash B A रो नै कि A dash बनै छी एटी B अछि this one is A dash ये गोटे XOR गेट हाँ XOR गेट XOR तो subtractor रे गोटे XOR गेट थाए and we have another AND gate and NOR gate. Design a half adder using 4 into 1 mux with neat diagram. ये बहुत easy देखो किंतु बते दउची easy किंतु easy एटा easy first adder रो circuit बनेबो 0 plus 0 0 plus 0 0 carry 0 0 carry 0 for 0 plus 1 0 1 carry 0 1 plus 0 1 carry 0 for the 1 plus 1 value 1 plus 1 एक को 8 रे ऐड करले केते हवा आसीबो आउटपुट 0 and carry bit is 1 carry bit is 1 तो we will लिखिबा सेमती देखो सिमिलरली लिखिबो तीडा मॉक्स बनेइबो एमती देखो तीडा मॉक्स बनेइबो 0 1 2 3 सिमिलरली देखो एमती लिखिबो मॉक्स तीडा बनेइबो 0 1 ये कोन देखा जोनी किछि 0 1 2 3 मझिरे लिखिबो लेफ्ट साइड रे जोडा सम रो अछि सम रो पूरा बीट लिखि देबो 0 लिखिबो ऊपर अछि नेक्स्ट यू हैव 1 नेक्स्ट यू हैव 1 नेक्स्ट यू हैव 0 similarly for the add on bit we have this 0 over here this 0 over here this 0 over here this 1 over here similarly 0 1 2 3 okay दीटा सी चैनल रखिबा S0 S1 S0 similarly basic mux structure बनेबो आ कोन इतरे difficult no data mux table बने link करियो you'll get the output S and C S for sum C for carry okay this is the basic idea of an half adder with 4:1 mux actually half adder can implement the full adder using two half adders ये गोटे इजी क्वेश्चन हाफ एडर गोटे दिया ये ट्रुथ टेबल टिके देखिबो निजे पढिबो हाफ एडर माने कोन दीटा बिट को ऐड करी 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 0 लिखिबा आउटपुट रे कैरी रे 1 ओके तो इट हैज सपोज टू बी a XOR b and a dot b तो a XOR b यार वैल्यू आसीबो a XOR b दिस इज a dot b इतरे a dash b थिला सॉरी a b dash थिला इतरे a dot b आसीबो that is the half adder circuit okay जो जोटा मु कहूची इजीली कहि दउ जे स्लो करी कि देखिबो वीडियो को और आउ थरे पढी दबो जोटा डिफिकल्ट पार्ट मु एक्सप्लेन करिवि नेक्स्ट डिजाइन फुल एडर विथ नीट डायग्राम ये होची इंपोर्टेंट पार्ट तीन बिट को ऐड करिवा तीन बिट को ऐड करिवा लुक एट द ट्रुथ टेबल फर्स्ट देखो
For 0 0 0 0 plus 0 plus 0 we'll get 0, carry get 0, 0 0 1 1 0, similarly 1 0, 0 plus 1 plus 1 ଦୁଇଟା 1 ଆସିଲେ 0 ଆସିବ, carry ଆସିବ 1, ଗୋଟେ 1 ପାଇଁ 1 0, ଦୁଇଟା 1 ଆସିଲା 0 1, ଦୁଇଟା 1 ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍। Okay, next we have 1 plus 1, similarly over here third one also a similar case. Next 1 1 1 তিনটা 1 thele kon habo দুইটা 1 ପାଇଁ ये 1 नहीं ଯିବ, for the 1 it will be as carry, okay ताको carry नहीं ଯିବ, that's a carry bit। तापरे how to make k map from this, sum ପାଇଁ ଦେଖ sum ର value ଅଛି ନା 0 0 0 1 ଏମିତି just value ଲେଖି ଦେବ ସାଇड ରେ 0 1 2 3 4 5 6 7, similar over here for the both side, just make a 3 bit 3 bit ର ଗୋଟେ ବନେଇବ k map, zoom out कहीं होनी है, 3 bit ର k map बनेइब जो जो जगह 1 अछि देखो 1 by 1 अछि, 2 by 1 अछि, 4 by 1 अछि, 7 by 1 अछि, 1 7, okay either output for similarly last part by this is the fourth one, either output। so starting रे 3 bit ପାଇଁ ଆସିବ a xor b this equals to a xor b xor c and for output will be ab plus ac plus bc, तो gate बनेगा ab plus ac plus bc। for the xor gate a xor b xor c the output will be a xor b xor, ये diagram देखो it's a xor b xor c output this part, and rest part is this is first one is ab bc ca और सब add है last ab plus bc plus ca, okay that is the full adder। next jump to the next important one, 3 bit magnitude comparator using logic gates, ये होगी very important question, 3 bit magnitude comparator, तीनटा bit ର magnitude comparator केमती जानिबा, okay how to compare a 3 bit value, let's suppose a number 1 0 0 1 0 0 दुईटा नंबर अछि, सेम नंबर हे बना दुईटा नंबर अछि a b c x y z, तो कौन कौन हे पारिबो देखो फर्स्ट केस 1 a suppose a b c equals to x y z, ये case 1। for the case 2 a b c greater than x y z, for the case 3 a b c less than x y z, तीनटा केस हे पारिबो उडे if there is a two number it can be equal or greater than someone is greater someone is less, so एमदी कंडीशन हे पारिबो सेटा देई जी देखो फर्स्ट देई जी इक्वल टू पई this part is for equal to, this part is for smaller a smaller than b, third one is a greater than b, तीनटा पार्ट पे तीनटा इक्वेशन देई छी, इक्वेशन में खाली तुमको इजीली बता दउजी केमती स्टडी करिबा इक्वेशन देखो फर्स्ट पार्ट यदि a equals to b हिथिबो गोटे एक्सप्लेन कर दउजी बाकी इजीली तुम बुझी पारिबो, सपोज नंबर अछि 1 0 0 1 0 0 दुईटा नंबर अछि यस और नो, यदि a होची नंबर a होची नंबर b, यदि a equals to b हेबा पई कोन दरकार, तीनटा बिट जो अछि सपोज तीनटा बिट एतरे अछि a2 a1 a0, एतरे बिट अछि b2 b1 b0, for a equals to b what is the condition, a2 equals to, ये तो कौन सा देखा जाओ नहीं स्मॉल साइज नहीं रे यार, देखो for a equals to b condition पाई कौन होगा देखो a2 equals to b2 a1 equals to b1 a0 equals to b0, a0 this one is 0, this is the condition। तो दीटा नंबर सेम हेबे तार फर्स्ट बिट भी सेम हेबो सेकंड बिट भी सेम हेबो एंड थर्ड बिट आल्सो सेम, ओके दिस इज द इंपोर्टेंस, यदि ए तीनटा बिट सेम हेबे यदि ए यदि 0 थिबो सपोज करो ए बी सी तीनटा नंबर अछंती और जे फॉर्मेट दे साइड लिखि देबा a a a0 a1 a2
तीन जदि नंबर सेम अछंती टू द नंबर B0 B1 B2 जदि A0 normal number हेले if A0 is 1 or A0 is A0 then B0 also be B0. yes or no? A0 equals to B0 first condition. আর যদি A0 টা A0 ড্যাশ ଅଛି 0 ফর্ম রে ଅଛି that supposed to be 0 যদি A জেনারেল কেসে দেখো যদি A0 থিব A भी 0 হবো A1 থিলে A1 হবো A0 থিলে A0 হবো তাহলে দুইটা নম্বর কোন হবে সেম হবে সেম কন্ডিশন লিখিছি দেখো এদিকে ফার্স্ট ওয়ান দেখো টিকে ক্রিটিকাল দেইছি কনফিউজ হবনি just looks over here देखो যদি A equals to B कंडीशन देइछि तो A नॉट जे तीनटा बिट्स दे देखो A रो तीनटा पार्ट्स अछि A2 A1 A0 ये A रो कार A रो सेकंड पार्ट अछि B2 B1 B0 ये कार B रो तो फर्स्ट कंडीशन देइछि यदि A equals to B हेबा ताले A0 equals to B0 A0 equals to B0 तापाय कंडीशन कोन आसीबो यदि A equals 0 equals to B0 माने A dash B dash plus AB equals to 0 ये कंडीशन आसीबो देखो ये कंडीशन केमती आछी देखो फर्स्ट वाला बते दउछि खाली गोटे आउतरे कहि दउछि दिस पार्ट ये A equals to 0 ए जो पार्ट अछि A0 equals to B0 अछि ताकू केमती ये करि देखो गोटे बुझा सब बुझी परिबो इजीली if A0 equals to B0 माने कोन माने होउछि A जदि A0 जदि डैश हेतिबो B0 कोन हबो डैश और माने कोन प्लस A0 जदि A0 हेतिबो B0 हेबो या मीनिंग कोन यार मीनिंग कोन ये जो लिखी छी एक्सप्रेशन यार मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट A0 जदि डैश हेछि माने ये 0 फॉर्म रे अछि A0 टा 0 B0 टा 0 प्लस A0 जदि 1 फॉर्म रे अछि ये जदि A0 1 अछि फर्स्ट नंबर रे ये भी 1 this is the meaning of this part ताकू लिखी छी in the form this and ताकू रिपीट करी this is for A0 this is for A1 this is for A2 similarly over here देखो if A is less than B A जदि less than B हो दीटा नंबर अछि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करी छी दीटा नंबर अछि A2 A1 A0 B2 B1 B0 तीनटा बीट रा नंबर अछि दीटा रे यदि कंडीशन कोन यदि A होछि लेस कोन दे दिन गोटे लेस देन B यदि A छोटा अछि B रो B is greater than A then what are the condition first ला यदि A2 B2 यदि A2 टा B2 रो बड़ then already C बड़ हो गलानी already देखो फर्स्ट कंडीशन कोन if B2 is greater than A ये फर्स्ट कंडीशन देखिए देखो ये फर्स्ट कंडीशन if A0 is greater than this फर्स्ट कंडीशन जदि फर्स्ट नंबर टा बड़ हो जिवो से बड़ अल्टीमेटली हे गलानी नेक्स्ट नंबर को जिबा जदि एदिडा इक्वल सेकंड कंडीशन जदि इक्वल हेले सेकंड को जिबा ये चेक करिबा कोटा बड़ जदि से भी जदि इक्वल हैला विल जंप टू थर्ड पॉइंट कंडीशन थर्ड टा बड़ हबा कथा जनरल आईडिया उडे दे दोछि क्वेश्चन उडे दे दोछि 0 1 0 1 1 0 0 दीटा क्वेश्चन किए बड़ व्हिच वन इज द बिगर वन जनरल आईडिया आईटी देखि देखिबा टिके कोडा बड़ डेफिनेटली दिस वन इज बिगर दिस द A दिस द B ये बिगर जदि 1 1 1 2 2 2 दीटा अछि जो फर्स्ट दीटा सेम अछंती यस और नो सेकंड दीटा सेम अछंती यस और नो ए थर्ड केस को आसु कि नाही एट द थर्ड केस सेम दे देछि देखो if A is less than 0 or this and this is second part by or third part ओके जस्ट सही कंडीशन ही देछि आ किछि नै से कंडीशन देछि तापर तार गेट बनै छै आ कोन ए गेट रो आसिला फर्स्ट गेट ए गेट रो आसिला सेकंड गेट ए गेट रो आसिला थर्ड गेट एंड इफ यू लुक फॉर द इक्वेशन समस्त इक्वेशन देखिबो ए तीनटा पार्टटा जदि मु याकू ए फर्स्ट ये पार्ट को x याकू y याकू z नहीं जाए x y z नहीं जाए ये x y z सबुतरे रिपीट अछि देखो इतरे अछि z this one is also z this one is also this one is also z this one is also z अछि ना नहीं सबुतरे पार्ट अछि ना नहीं तो सही z पार्ट गुडा को ए जगह रे लिंक है देखो for this part you will getting a
Z over here, sorry, you know, you getting a Z over here, you're getting a Z over here, you're getting a Z over here. तीनटा इक्वेशन तीन थर Z add on है को एनालाइज करिवो यदि बुझी न पारला आउथरे आई विल एक्सप्लेन दिस. ओके, come to the fourth unit 4 को जीवा latches and flip flop. Latches and flip flop already we have discussed this part. Flip flop कोन memory device ये होचंदी memory unit. memory जेमति सेव करा जाए जेमति डाटा सेव करो फोन रे डाटा ट्रांसफर कर देबा को memory कोन memory से गोटे बिट डाटा स्टोर करियो. flip flop able to store one bit of data, one bit केता स्टोर कर परबो. it is able to store one bit of data, गोटे सिंगल बिट से स्टोर करी पारिबो. that is the flip flop. तापर यार डिफरेंस अछि flip flop latches मझिरे हला. latches होची गोटे लेवल ट्रिगरिंग, flip flop होची एज ट्रिगरिंग. it's a edge part, it has edge, it's an edge level. एटा कोन पढी बाडी देखि देबा साइड देखो लुक्स ओवर हियर. एटा जका नाही गागोटे अछि एटा जका अछि देखि देबा. व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग? ट्रिगरिंग कोन गोटे क्लॉक सिग्नल रे if there is a clock signal like this, को पार्ट रे हम सर्किट को ऑन करिबा तार चारटा मेथड थाए. देखो ये लोअर पार्ट रे फर्स्ट, ये कला पार्ट रे टू लोअर पार्ट गोटे रहिबो, ये हायर पार्ट गोटे रहिबो सेकंड, नेक्स्ट ये साइड वाला पार्ट गोटे रहिबो थर्ड, ये तलको वाला गोटे पार्ट रहिबो फोर्थ. चारटा पार्ट होई, चारटा पार्ट ट्रिगरिंग होय. फर्स्ट 1 एंड 2 को कहा जाए, 1 एंड 2 को कहा जाए लेवल ट्रिगरिंग. ये होची जीरो लेवल, ये होची 1 लेवल. सो नो दैट इज लेवल ट्रिगरिंग. लो लेवल और हाई लेवल, लो और जीरो, लो लेवल और नेगेटिव ट्रिगरिंग. सिमिलरली 1 is high और पॉजिटिव ट्रिगरिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट. तापर 3 4 3,4 वाई कोन लिखि देली 3 4 3 4s आर एज ट्रिगरिंग, EDGE एज ट्रिगरिंग. जोतरे की गुडे कोन लीडिंग एज, गोटे 0 ରୁ 1 की जाउची एटा लीडिंग एज. नेक्स्ट वी हैव लैगिंग एज. लीडिंग एज को कहा जाए पॉजिटिव, तल को जो जाउची ता कहा जाए नेगेटिव. चारटा प्रकार ट्रिगरिंग थाए, लो लेवल, हाई लेवल, एज ट्रिगरिंग, गोटे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. नेक्स्ट होई सेटा गुडा लिखाई छै पढी दबो टिके. व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स? डाटा स्टोर करिया को टेम्पररी डाटा स्टोर करिवा ताको फ्लिप फ्लॉप कहा जाए. फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशन इन रजिस्टर फॉर डाटा स्टोरेज, काउंटर्स फॉर काउंटिंग पर हेल्प करे. Shift register for transferring data serially. They are also used in frequency driver memory units and for creating the state machines. State machine माने कना low state high state से गुडा को ये मानो state माने तुम्हारा state इन जिला परिषद से गुडा को which are the fundamental of components in digital electronics. तापर race around condition गुडा. What is race around condition? तुम्हारा JK flip flop रे गोटे क्लास रे कहितली for the JK flip flop JK we are getting Q dash. जो JK रो ट्रुथ टेबल बनइबो for the 0 0 it is remain unchanged, for 0 1 it is a reset, for 1 0 it is a set, for 1 1 it's a toggle. ये जो टोगल पार्ट टा से JK रे से टोगल पार्ट टा कोन हुए, ये जो ट्रुथ टेबल दार देखिबो टोगल पार्ट टा कोन हुए सीए क्लॉक को ऑन अप कर दो एमती ऑन ऑफ कंटीन्यूअस करिवो. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एमती कर चलतिबो से 0 1 तुम्हारा क्लॉक टा माने गोटे लॉन्ग टाइम पई ऑन हेगे रहि जिवो. लिखाई देखो रेस अराउंड कंडीशन इज एन इशू इन लेवल ट्रिगरिंग. जोटा खाली लेवल ट्रिगरिंग को लेवल ट्रिगरिंग हो लेवल रे होए. कीप दैट इन माइंड. जोटा 0 लेवल इन दिस इज लेवल ट्रिगरिंग. द लो लेवल 0 और नेगेटिव लेवल 0, फर्स्ट वन हाई लेवल 1 और पॉजिटिव लेवल 1. ओके. और JK flip flop
where the continuously toggle becomes unpredictable, and if the both JK inputs are clock pulse activated too long, this can be avoided by देख अनप्रिडिक्टेबल हो जाए फर्स्ट वन तापर कौन हुए 0101 जो टोगल होची सेटा लंबा टाइम पे टोगल हो जाए लंबा टाइम पे ओके से स्टिक कर रहन तापर मास्टर स्लेव होची ए रेस अराउंड कंडीशन को याको अवॉइड करिया बनाई छी याको अवॉइड करिया पई बनाई छी दिस मास्टर एंड स्लेव जो कि दीटा जेके फ्लिप फ्लॉप थाए गुटे थे मास्टर गुटे थाए स्लेव ओके तो डायग्राम में भी थाई पारे थोड़ा देखिबा एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एको पढिबो डी फ्लिप फ्लॉप कोन डेटा सेव करिवो से तार डी रो दीटा इनपुट थाए 0 1 इनपुट थाए 0 पाई से रीसेट करिवो 1 पाई सेट करिवो और 0 पाई से 0 सेव करिवो 1 पाई 1 सेव करिवो सेतिकी डाटा तार कोन मेंशन द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन रिपल काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर रिपल काउंटर माने गुटे परे गुटे रिपल काउंटर माने होची गुटे परे 1 परे 2 ट्रिगर हबा 2 परे 3 3 परे 4 ट्रिगर हबा शिफ्ट रजिस्टर माने गुटे परे आ गुटे को शिफ्ट करिवो और रिपल काउंटर यूज जे टी एंड jk used in ripple counter d used in shift register डेटा होची शिफ्ट रजिस्टर यूज करा आगो को पढिबा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन असले देखिबा ड्रा द सिंबल एंड राइट द ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप ए पढिबो नीचे जेके पई देखो 00 पई से qn होए 01 पई 0 010 पई 1 इट इज माय टॉगल होए ये अनचेंज this is reset this is set okay तापर अछि if you look at the diagram of this jk flip flop देखो jk flip flop देखिबो diagram for the value of 0001 1011 value देखिबो for this value 0001 1011 if it is primarily 0 so 00 पाई 0 ट्रिगर करिवो तापर देखो 00 पाई for the 0 value 0 for the 1 value यहाँ पे ए जगह 1 आसिले will trigger 1 similarly it will for trigger this triggered 0 ultimately it will trigger 1 over here then trigger 0 एमती चलिबो तार कोन जेके फ्लिप फ्लॉप टी देखि देबो और at the truth table of SR flip flop similarly over here देखो SR QN X 0 1 hold reset set invalid SR रे 1 कंडीशन इनवैलिड थाए जोड़ा कि जेके रे ए पार्ट टा कोन हो जाए टॉगल हो जाए यदि ए पार्ट टा तुम बुझी ना पारला ना इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट जस्ट सिंपली देखो जे पाई गोटे इनपुट अछि के पाई गोटे इनपुट अछि for the jk value it is just trigger on the edge triggering this edge time रे rising edge रे से trigger होची एते ही बुझी था difference between combinational and sequential circuit simple combinational circuit रे तुमरो देखो ये डायरेक्ट इन कोला इन देला आउट मिलला यार काम खत्म ये कोन करो sequential रे इन आसीबो आउट आसीबो ये ताको सेव करिवो और नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट स्टेप आसीबो नेक्स्ट स्टेप ओके नेक्स्ट ही आसीबो और से सेव करके रखी देबो ओके ये वन टाइम वाला ये मल्टीपल टाइम वाला ठीक है फर्स्ट वाला आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट माने जनरल करंट एई टाइम रे जो इनपुट है ता ऊपर डिपेंड करिवो सीक्वेंशियल सर्किट देखिबो आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट एंड पास्ट स्टेट मेमोरी ये पास्ट स्टेट भी डिपेंड भी करे एंड ता मेमोरी स्टेट रे भी से डिपेंड करे ओके memory element doesn't have memory element not थाई memory element थाई that is latches and flip flop and latches type रे सेटा तार memory थाई टाइमिंग डायग्राम देखियो आउटपुट इज immediate based on input changes output कोन input देले output तार चेंज बाहर that is in form of combinational circuit sequentially कोन हबो से input तम दबो output बाहरिबो से previous output चेक करिवो कोन बाहर थिला आगरु ओके ये एनालिसिस वाला डाटा करिवो एनालाइज करिवो इतरे एनालाइज नाही एतरे क्लॉक रिक्वायर्ड न हो एतरे क्लॉक दरकार काइना से स्टेप बाय स्टेप काम करिवो सिंपल डिजाइन विदाउट द नीड ऑफ मेमोरी न थाए सिंपल डिजाइन थाए जर मेमोरी पार्ट आसीबोनी त माने इट सिग्नल बी लाइक इन देलो प्रोसेस आउट सेकंड पार्ट रे कोन हो सीक्वेंशियल रे इन प्रोसेस आउट सेव बैक टू इन ए प्रोसेस लागिवो सीक्वेंशियल रे आउ फर्स्ट फास्ट था इट इज स्लो रहिबो परफॉर्म बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन बेसिक काम करता है इट परफॉर्म दैट रिक्वायर सीक्वेंस एंड टाइम जो टाइम लागिवो टी आसीबो
टी एफ एंड टी आसीबो सेतिरे सेगुडा करे फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंस और पल्सेस बेसिक लागिबो से जगह हमर सीक्वेंशियल सर्किट यूज हुए यार पावर कंजप्शन लो था जनरली कन्वेंशनल सर्किट रो इट हैज वेरी हायर पावर कंजप्शन ओके एग्जांपल देखिबो एडाप्टर वेक्टर मल्टीप्लेक्सर यार देखिबो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप स्टेट मशीन काउंटर सब आसीबो ओके नेक्स्ट डिफाइन क्लॉक पल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगरिंग जस्ट कहि छै तुमको clock pulse का वाज फॉर द clock pulse represents series of predicts pulses that control the timing of operation in digital clock याकू कहा जाए clock pulse continuously जोड़ा 010101 that is known as clock pulse is known as clock pulse and if you look at the triggering part এটা দেখো বলছে দেখো পজিটিভ এজ ট্রিগারিং এই পার্টটা নেগেটিভ এজ ট্রিগারিং ডাউন পার্টটা তারপরে হচ্ছে লেভেল ট্রিগারিং ইয়ে হচ্ছে পজিটিভ হাই লেভেল ট্রিগারিং দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ लो लेवल ट्रिगरिंग ये ट्रिगरिंग था चार्ट टाइप देखिबो ठीक है एक्चुअली द वर्किंग ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप विथ ए फंक्शनल टेबल डी फ्लिप फ्लॉप गुड देखिबा डी फ्लिप फ्लॉप एस आर डी था देखो चारटा फ्लिप फ्लॉप था और टोटल थिलो छ हमर एस आर फ्लिप फ्लॉप रु आछि डी जे के रु आछि टी डी रे एस आर फ्लिप फ्लॉप एमति थिबो तार जो एस आर थिबो ए एस ए आर जो थिबो आगर गुटे नॉट गेट लगे देबो that is your D flip flop with you will get Q or Q dash similarly for the T JK थिबो हम तमर मझे रे JK तो इन आउट अछि जेतरे नॉर्मली गुटे जॉइंट दे देबो किछि करिवार नाही T जेतरे कि तुम पाइबो टोगल ओके नेक्स्ट what we have ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଲୁକ୍ ଓଭର ହିୟର ଡେଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଫର୍ ଡେଟା ଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ଦେଖ ବାକି ଦେଖିବାର ନାହିଁ 0 ପାଇଁ ସେ ରିସେଟ୍ କରିବ 1 ପାଇଁ ସେ ସେଟ୍ କରିବ x ପାଇଁ ସେ ପରଫର୍ମ କରେ ନାହିଁ draw the explain the operation of t flip flop देखो t ପାଇଁ ये ऑलरेडी ଆମେ एक्सप्लेन କରିଛୁ क्लास रे ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ଚାରଟା यार 1 2 3 4 चारटा NAND गेट थाए फॉर द जो इनपुट देबो टी फ्लिप फ्लॉप ପାଇଁ कोन हम टी फ्लिप ପାଇଁ बोथ सेम इनपुट रहबो तार टी देले इज 1 देले इफ यू पुट 1 ओवर देयर 1 ओवर हियर इधरे 1 जीवो सेम टाइम रे क्लॉक अछि 1 1 1 ପାଇଁ ये देबो 0 1 1 ପାଇଁ ये देबो 0 इट विल अल्टीमेटली गिव्स ए टॉगल कंडीशन 0 ପାଇଁ qn देबो 1 ପାଇଁ qn डैश देबो माने 0 ପାଇଁ से 1 देबो 1 ପାଇଁ से 0 देबो ओके दैट इज द वर्क ऑफ टी और टॉगल फ्लिप फ्लॉप टॉगल कहंती नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप explain the working of SR latches okay SR latches को देखियो if you look at the SR latch कौन रहिला तमरे unit 4 पे आज की पढिबा unit 5 we will explain this in next classes or somewhere in other classes SR latch looks over here इधरे तुम्हारा SR देखो SR दीटा NAND गेट देखि दिया है NAND गेट 1 NAND गेट 2 दीटा NAND गेट अछि look over here for the s equals to 0 r equals to 0 condition निजबा s0 r0 0 0 हेले for the 0 value will get 1 for the 0 value will get 1 so both जगह 1 निजबो so it is latch condition ताको latch कहंती से वर्क करिवनी तापरे for the 0 1 value जदी s 0 अछि and r टा 1 अछि it is 1 for the 0 value will get 1 over here 1 1 by ये 0 आसी जिवो तो ये याकू कहंती 0 1 condition और reset condition for the s1 value it will become 1 0 or set condition अच्छा set रे साइड इधर आसीबनी just 0 1 1 0 माइंड रखि दाओ से गुडा आसीबो for the 10 mark question sketch the logic diagram of SR clock explain एटा कोन दै छी SR पई इंडिविजुअल लिखाई देखो SR ट्रुथ टेबल बनैबो it is a truth table SR truth table first page by no change next 0 next 1 next x explain कर जिता परे फर्स्ट कोड करिके इफ s is 0 फर्स्ट देखो s0 r0 हेले s0 r0 हेले तो आउटपुट ऑफ गेट c and d are s1 dash equals to 1 r1 dash equal to 1 s1 1 हिजिबो r1 1 हिजिबो hence the output of NAND gate a and b remain unchanged for the first condition दे दीजी मु एक्सप्लेन कर दउजी देखो यदि ये 0 रहिबो ये 0 रहिबो 0 पई ये 1 हिजिबो ये 0 पई 1 हिजिबो ये यदि 1 1 both side हे गेले this 1 पई this doesn't function so it remains unchanged ये हला फर्स्ट पार्ट तापर यदि if you consider the next part
if this set is 1, this one is 0, this 0 for you will get 1. ये clock always 1 था 1 1 ପାଇଁ 0 ପାଇଁ 1 ପାଇବ 1 ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି ये 1 ଅଛି this 1 1 ପାଇଁ 0 ପାଇବ 0 ପାଇଁ ये 1 ହେଇଯିବ ultimately 1 1 8 A1 ଟା ଏଇଠି ଆସିବ ଏମିତି ये 1 1 ପାଇଁ ଏଇଠି ପାଇବ 0 ये ମିଳିବ ତମର 1 so 1 0 ମିଳିଲା 1 0 is a set condition ତାପରେ if this is 1 this is 0 so you will get ultimately 0 1 that is reset condition okay ଏଟା ଟିକେ ପଢିବ ଆଉ କଣ step by step ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି तापर कौन अच्छी sketch the logic diagram of master slave flip flop explained with functional table ओके देखो master slave flip flop रे दीटा जेके flip flop थाए JK1 जोड़ा JK M master JK slave गोटे master थिवो गोटे slave थिवो हैला master और slave मझे गोटे NOT gate लगी थिवो this NOT gate there is a NOT gate between master and slave and what it does ये देखो ये पॉजिटिव हाफ्स इन क्लॉक तुम्हारा जब जाए ये क्लॉक जीवा ना क्लॉक ये पॉजिटिव प्लस साइड रे माइनस साइड रे प्लस रे ये ऑपरेट हवा मास्टर प्लस रे मास्टर ऑपरेट हवा लोअर रे स्लेव ऑपरेट हवा मास्टर फर्स्ट ऑपरेट हवा देन स्लेव ऑपरेट हवा so that will eradicate the race around condition it will remove a race around condition ये रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव कर दिए बाकी ये पढ़ी देबा कोन अछि इधर देखिबा फर्स्ट लिखि जी इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज मास्टर एंड स्लेव नेक्स्ट वी हैव इन द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्शन पढ़ी माने ऑपरेशन देखिबा व्हेन द क्लॉक पल्स goes to high the slave when the clock pulse goes to high the slave flip flop becomes inactive and input JK can control the state of the system okay when the clock falls below low the information transferred to the master flip flop to the slave flip flop the final output of the system is obtained देखो कौन कहूँ से देखो first part कहला first इधर clock तुम्हारा positive if you look at the clock this is the clock ये positive part रे ये JK ऑपरेट हवा उड़ा आउटपुट दबो ये नेगेटिव पार्ट रे नेगेटिव साइकिल रे कौन करिवो this negative cycle ray this slave will operate and it will give a output over here माने दीटा कंप्लीट गुटे कंप्लीट पूरा साइकिल पाई साइकिल हेले हाई लो एमदी हाई वैल्यू लो वैल्यू पूरा कंप्लीट हेले it will give an output okay so that will remove the errors around condition so tiki लिखाई छे कोन अछि from the circuit it is clear that the master flip flop is a positive level triggering and the slave flip flop is a negative triggering positive रे master operate habo negative रे slave operate habo next what we have consequently the master slave flip flop respond before the slave flip flop now let us discuss the operation of the a कोन let's discuss the answer कोडे बोला तार what is the answer देखो केमती ये कोन करछि भाई तो what will happen देखो तुम्हारे जेतेले दीटा फ्लिप फ्लॉप सेम फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट हुए for the zero value if you want to toggle the condition or you want to get the side value or reset value तो तुमको पूरा कंप्लीट साइकिल पर थोड़े सेट मिलिबो कंप्लीट साइकिल पर थोड़े कंप्लीट क्लॉक साइकिल पर गोटे रीसेट मिलिबो आगरो जो रेस अराउंड कंडीशन माने ऑफ ऑन एटा कंटीन्यूअस चलीथिबो जो केते सेकंड पई सेगुडा को मास्टर स्लेव रे हुएनी काई गोटे पॉजिटिव हाफ रे ऑपरेट होची गोटे नेगेटिव हाफ रे ऑपरेट होची गोटे ऑन रहिले गोटे ऑफ रहउची आ गोटे ऑन रहिले पुणी आउटे ऑफ रहउची सो मास्टर पर स्लेव फॉलो हो स्लेव पर पुणी मास्टर फॉलो हो सेमिति यू विल गेट द बेटर आउटपुट और यू विल इराडिकेट द रेस अराउंड कंडीशन ओके हो आज क्लास रे एतिकी पढ़िबा नेक्स्ट काउंटर पार्ट अछि काउंटर तुमरो नेक्स्ट कोड क्लास गोटे पढ़िबा जो पार्ट तुम बुझी हो नथिबो जोडा तुम होल्ड करलो कि स्लो करके वीडियो देखिबो और कहबो यदि प्रॉब्लम अछि हो तो आज वीडियो रे एतिकी पढ़िबा तापर नेक्स्ट जोडा देखिबा गोटे ट्राई करबा थरे गोटे ऑनलाइन क्लास करबा को जदि बुझी होनी कि किछि होनी रेस्पोंड देबो कमेंट रे